Assalamu alaikum, everyone. Thank you for coming on this Zoom session on a very short notice. I just thought I can talk and I can take questions and I can resolve the answers which you are looking for me and in the chat box. So let's do. Thank you for coming on this Zoom session on a very short notice. I just thought I can talk and I can take questions and I can resolve the you are looking for me in the chat box. So let's do. Okay, we are waiting for many participants. Good evening, Viniki. Winky, yes, Winky. Someone named by Winky. Wa alaikum salam. Sayyid Naki Hassan saying Assalamu alaikum. And Assalamu alaikum, Najam. Thank you very much for joining. Thank you very much for everyone who coming on board. I know, Uzair, you're working in the pharmacy. I can see you in a green tie. That's looking good. Green tie is always good. And I'm wearing a green shirt as well. Let's wait for another few minutes. Let's wait and let everyone to join, and I'll welcome everyone. And I like to take the questions. So this is an opportunity for you guys to ask question. I'm not telling anything, I'm taking questions. And the best way to ask the question is to raise their hand and ask your questions in a way. And please ask your question in your first attempt. Once you do, when you finish, let the other person do their questions. Because what happens sometimes, if you ask a question, you keep asking the question, you keep asking the question, the other people get frustrated and they won't get a chance. So I will like to take everyone to participate. There's a reason why you're here. You are not here for fun. You are not here to see me. You are here for your questions, right? So please make sure you ask your questions. Please make sure you take answers what you're looking from me. Sometime in chat box, we could not answer those questions, but I'm here to serve you. And so whoever had a question, please, there's a box there in your Zoom where you can raise your hand like this. Do you know how to put a raise hand? I'll show you how to do the raise hand in the chat box. Like you can raise your hand. That means that you can see that yellow sign there against my name. That's how you can raise your hand, ask your questions. And whoever will be in the queue, I will take the queue. I will answer those questions first. Who will raise the questions or who will raise these raise hand? Okay, I'm still waiting for a few people. I'll just put the song on and I'll just wait for a few seconds. There are people coming, and whoever can't join because of any limitation, just check our Zoom. Sorry, not Zoom, but Facebook Live. You can see the session live as well. It will be recorded there as well. That's good. I can see some raised hand. That's very good. You understand my message. So I'll lower my hand. So we have Rabil and Afsar on queue. That's very good. I'll just wait for a few more minutes and then we'll start taking the questions. Maybe appropriate would be that if I can see you on the camera, because I am visible, so I want you to see as well. I want to be connect with you. So make sure when you're asking the question, say your name, introduce yourself, and then ask your question. Okay, so that's the best way. I need you to introduce yourself, where you from, what you done, and then ask the question. So I know a little bit about your background as well. So I'll just check whoever is coming. I'll just message in my other groups, and we have 3 main groups where I'm dispersing this message. Not all the groups, not the study group, not the jobs group. It's just the new starter information group that I'm just dispersing this Zoom link. Let me see if they're coming or not. If anyone got a story to tell me, please, you are all welcome to say anything while I'm messaging everyone.
Just give me one more, half a minute more, and then we'll take the question. Okay, 10 more seconds. Okay, so we have 20 people or 25 people so far, few more people coming. All right, who is the first content person who have a question? I can see raise hand from Miss Rebel, Rabail. Hi, Assalamu alaikum, how are you? Assalamu alaikum, sir. I'm good. How are you? Yes, I'm very well, very excited to serve everyone who's here today on a very short notice. Within 15 minutes, we declare that we're Thank doing you, a sir. Zoom. You have opportunity to ask questions. Please introduce yourself and carry on. Yep. Sir, as you know, I'm a pharmacist, pharmacy graduate from Karachi, but I did my graduation in 2007, so it's been very, very long now. I have few years of working experience since I'm a mother as well, and I'm a housewife currently. I'm living in Turkey, Oh, yeah. and currently I'm not working here. Yes. So now I'm looking forward for KAPS exam, and for that I have few questions because there's a very short time left for the next July exam. So for that I would be needing your tips and tricks to how to pass. First of all, I've seen video of Dr. Hamna, and Yes. she was my colleague in Khan University. We have been trained together. So I was very glad to see her, and she passed the exam. Then at the same spot, I contacted her as well. And the way she has explained all the process, what she has gone through, that was quite similar because being mothers, it's not that easy. And to go through pharmacology or any aspect of pharmacy, any subject of pharmacy, it's not really easy after such a long gap. Even though we are being experienced, but still, our fundamentals are just shattered. So we need to go through each and everything. So in short, my question is, I would be needing tips and tricks how to pass and how to study in a very short span of time. Okay. So the goal is to pass the exam. That's your question, right? In a short period. Exactly, sir. Okay. Yes. So you have seen Hamna talking today in the live session, and you have Yes. spoken to her as well. Did you? Yes. Okay. I So believe she's a little busy, she so may have given you all of her experience, that how she managed yes. that in 4 months. So I asked the question Yes. in my today's interview with her as well, that look, I know we have people who got short period, 3 months time. What is your Yes. advice for them? And she said, if they can study 5 to 8 hours daily, those material which we're going to give you, and study them hard, clear your concept, repeat those. Yeah, like there's a syllabus, there's a material that we're going to give, but use that, like what she was saying in Urdu, that just eat it, like everything, you just eat it, and make sure that you understand. If you stuck up somewhere, open your books, flipping what or reference book, to make sure that you understand what is the issue in that question. And that's how she studied. And this is the same example, or this is the same trick that I would tell you. Look, 3 months is good enough to pass you, good enough for you to pass. So don't, first of all, think that 3 months is not enough. When I saw your message, I think I spoke to you yesterday, and I saw your message today Yes. that you're saying that if I do my assessment, can I sit in November? So you already delayed that
learning time. Because I got very You already scared. expanded for another four months. So 3 months plus 4 months, so 9 months. So you're putting a 9-month time frame for your study. That is not recommended for CAPS, obviously. No, I Okay. won't recommend anyone to study 9 months or 7 months or eight Okay. months to study and do the CAPS. You will forget things. Okay. Okay. So if you're starting Yes. from tomorrow, and if you're giving the exam in November, there's no point of do that long preparation. You need to memorize and you need to use that knowledge in an attempt of passing the exam, and that need to be done within 3 months, not that 6 months or 12 months. Some people say to me that I been told that I need to study 12 months to pass the exam. I said, that's rubbish. That's absolutely wrong, because that time frame is too long. Mm-hmm. But if someone say, I have 2 weeks time, can I pass my CAPS? I would say no. I would say no, because 2 months is too short. But 3 months is very reasonable time. When you're not working, when you have family, you can accommodate that time. You need to believe on you. Look, you have studied in past. Past mean that when you were pharmacy in 2000, when you were in pharmacy in 2007, obviously, you did not pass with any shortcuts over there, right? So you must spend some Yes. time and you pass the exam. So this is the same thing happening. You have the stuff, pass papers, study them, pass the exam. Simple as that. So that's the trick. So that is one of the point I wanted to ask, that are the CRPs enough to study? No, And no, one more no, thing. no, 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 not Okay. enough. No, we will give you some. Okay. That's why I was saying to you yesterday, submit your application to CAPS and give me Yes. the proof, and then jump into my group, elite group. You will get everything. Okay. Okay, sir. And I would like to request for the recalls what she was talking about. The recalls and the notes of Dr. Hamdi, I don't know. You don't need to I know. think You she don't need must to have know shared. who's what Okay. is what. You don't need to know. You don't need to focus on Okay. that. You just need to focus on submitting your CAPS and believing that Okay. what I'm going to give you is enough for you to pass the exam. Forget about the names of those academies or anything. Just forget everything. Uh-huh. Okay. If you start thinking that, oh, that academy person, which Hamna said, can I get that or not? You will get that, because when you come in the group, you will get everything there. Okay. 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 Fine. If Now you it's trust clear me, in my mind. if you trust that Hamna Yes. passed through my expertise, were you listening the conversation this morning? Yes. Yes. I Exactly. call But her the and I points what explain she. her Yes. the Yes. same Yes. call I made for you yesterday. Similar call that I made Yes. for her. Similar call I have already done with you. So you need to not Yes. just need to believe that you can do it. Yes. Okay. Definitely, sir. Inshallah. That's all. Thank you so much. Thank you. And I would like to see you submitting the papers to CAPS and send me the proof that you Yes. have done it. Inshallah. And it's in your control. It's not my control. You can press a button, submit the fee, and send that maybe tonight. You can do that tonight. You can't, it's in your control how quickly you want to get into this trouble. Yes. Okay, sir. Okay. Done. Okay. Take care. Thank Thank you. you. Thank you. Okay. Thank you for conversation. Afsar Ali, how are you? I can see your name next, please. You can unmute yourself and discuss what is your question and how we can serve you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, sir? Yes, I'm very, very good. Thank you. Okay, this is Afsar Ali. Professionally, I'm pharmacist, and I complete my Form D in 2012. Okay, and nowadays I'm working in Saudi Arabia as a pharmacist, and I have approximately 10 years of experience in field of pharmacy. Great. Great. Okay, so I'm going to submit my assessment, skill assessment. Correct. But there is one confusion in that I have. Yes. Okay, Yes. my all documents are complete. Yes. Okay, but for the experience, Yes. okay, I want to submit my experience also, because I have, alhamdulillah, the good experience. Okay, I don't want to miss that the option of the experience, because I heard that for the experience you have some points, okay, which will help you for your visa processing. So is it right? Is it correct? Or we should not focus on the experience option? Look, I would suggest you that what my understanding is that experience is checked or verified by Department of Immigration, not by CAPS. This is my understanding. Okay. CAPS is only your
qualification assessment. Okay. I know they have given a form for work experience. Have you gone through that form? Have you seen that form? Actually, here the problem is that in Saudi Arabia, the most of the stamps and attestations in Arabic, number one thing. And my organization is not accepting to attest that form. They are giving their own employment letter. Okay, in that employment letter, each and everything is mentioned. When I joined, what's my designation and what's my responsibilities, each and so can I upload that form? Look, Afsar, in your case, if I would be in your position, I would not worry about my experience to KAPS. I won't even submit my CV to KAPS, because KAPS is the body who look after, who see your degree and give you a chance to pass that exam. And on the base of that, they give you a letter saying that your skill assessment is completed. Now go for the visa. When the visa comes, you get the points against the experience. So at that time, Department of Immigration would need you to submit your experience letter over there. That means that you have the opportunity to gain those points, like points, maybe 10 points or whatever the points are. Use that letter, whatever you got from your company, and submit in that time, at that time, not at the moment, not at the moment. If I would be in your position, I will submit my documents to KAPS and get my assessment done and sit in the exam. That must be your first priority. Don't worry about it. You will not miss out. You will not miss out your experience. Got it. That's great. Actually, I was only confused for this purpose that if I will not submit, so any problem with me in the future or no. Second thing is that I heard. Good. So inshallah, I will submit within 2 to 3 days, and I will submit the fee. So I have second question is that the last contestant, as you informed her that 7 to 8 hours per day, the study, okay. And I'm working in a hospital, so we are working on the rotations. Sometimes we are working in morning, night, and the evening shift. So it's not possible for us to give 7 to 8 hours for the study. Maximum we can give 2 hours, 3 hours like that per day. And what you suggest, after 3 to 4 days, I will send you the receipt of my KAPS assessment. Yes. And of course, I will, inshallah, I will be in the elite group. But how we can manage the study? The most of the problem for the peoples who are working peoples, they cannot manage the study. Okay. So how we can manage and how we can go ahead? I would recommend you to watch one of the video conversation that I recorded today from a pharmacist. She's a female pharmacist working in your country from Pakistan, and as busy as you. And she passed the exam in 3.5 months. She studied 5 hours a day. And in the last month, she took off from her work. She was not doing any work. She got 2 kids, and she managed. Just listen that conversation. Just go in my YouTube and click on the live session and see Hamna today. The first person, I interviewed 6 people today. So Hamna is the first one. She was interviewed by me, and we were discussing nearly 20 minutes about strategies, what she has done, and you can just copy paste exactly what she has done. Got it. I just want to ask you one your suggestion or recommendation. Yes. I have planned to sit in the exam in November. Okay. So what you suggest? What you suggest I should I can apply for the July? It's okay, or I should wait for the November, because I'm feeling myself more comfortable in November. It's up to you how hungry you are, how eager you are. You want to come to Australia. It's up to you. Okay. In the WhatsApp group, you have the study material as you informed before. So it will be enough as with the last contestant as you informed. Yes, enough. Yeah, you don't need it will be enough to any complete within for 3 months. Yes, you won't need anything else to pass the exam. Believe me. There's no academy will give you course and you will get a guarantee pass. There's nothing like that. Okay,
Got it. Thank you so much. Thank you so much for And your are you in time my and for group, your Afsar? suggestions. Are you in And my group? Are you already in my group or not? yes, I am in all groups. I am okay. Okay, so And I you're in sent my you one groups. Okay. message also So on have your you sent personal your WhatsApp. video as well, Afsar? Have you Yes. sent your video introduction with? I'm just trying to recall whether have you sent your video to me or not. I didn't send you my video introduction because I didn't submit my assessment. Once I That's will fine. submit That's my fine. assessment, That's inshallah, okay. within You 2 to can 3 days. submit. You can send your video introduction with your aims, your because video is actually about Yes. connecting with me. I need to know you, your mindset. It's nothing to do with Right, right. your assessment Yes, fee. Anyone who's coming to me, they need to do these few things, right, like connect with me on my right. the TikTok. I'm a TikToker pharmacist, so you need to have downloaded a TikTok app Yes, and watch those right, daily 2 information sheets coming from me. That will give you motivation. Just watch, just listen what Hamna is saying, because what she was saying, she actually surrounded right. herself with the atmosphere. She actually made Mhm. a huge shift in her surrounding about KAPS. And she Right. was saying that, Irfan, since Mm, I met you, I had a 1 hour phone conversation with you. After that, my life was changed. My husband supported me, and my husband was thinking, mhm. you are really dedicated to this. Just listen that conversation. There are so important points she was saying, and just listen what she have done. She was just doing KAPS, 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 Mhm. KAPS everywhere. Like सुबह में KAPS, लंच Mhm. ब्रेक में कैप्स की मटेरियल की पढ़ाई, गाड़ी में बैठ के कैप्स की पढ़ाई, और घर में आके कोई और काम नहीं करना, सारा काम हस्बैंड ने करना, उसने सिर्फ कैप्स को फोकस करना. So that's how she managed that time, and she passed the Right. exam, and she passed the PTE, and now she applied for a Mhm. PR visa. So this is the real story that is Mhm. recorded today, and is why I recorded that. Do you think I recorded to get more likes, or do I recorded did I record that for getting impression that I'm a great coach? No, I did that because someone like you just go there and watch it and see, wow, okay, this is done. And she's in your country, she's in Saudi Arabia as well, so you can know what is the environment, workload is. Okay. You can see how Mhm. many long shifts she was doing in her first 2 months, and then she escaped. She took leave from the work for 1 month Right. before the exam. Really, sir, thank you so much. Inshallah, after 2 days, I will submit and I will share with you my Okay, receipts you can and my submit today. video You can submit it introduction, today. It's all in your things. control. And yes, inshallah, inshallah. Okay, take care. Thank So you. thank you so much. And Thank you. inshallah. Stay connected. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye. Okay, Miss Rebel, आपका your hand is still raised. Can you please drop your hand because you left your raised hand in the Zoom. You need to just undo that, please. Yes, Mr. Saddam, Mohammed Saddam, आपका क्या question है? Please ask your question. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम. Sir, I have done my graduation in 2015 from Bahawalpur University, सद्दाम, Multan, and I have आप हाइड क्यों कर रहे हैं अपने आप को? Is there a reason? Are you undercover cop or what you are? no. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम जी बताइए जी. Sir, I have connected you a few days back. I have done my graduation from Bahawalpur University, Multan, and I have more than 6 years of experience in industrial pharmacy in industries in Pakistan. So first you recommended me to get tests, and but now I feel that, and you are always focusing on community pharmacy and stuff like that. And now my question is, can my background of industry can hinder me in my visa application if I pass the KAPS exam? And from where I have to start preparation? In last in this webinar, one of Mr. Imran mentioned that you can start preparation from pharmacology and then focus on pharmaceutical calculation. So my question is that is there any hindrance of my experience can hinder me in getting visa? Look, as you know, in my videos, I have explained that
quite significantly that pharmacist coming out of uni with no experience can do CAPS and can come to Australia on 491 visa by getting state nomination from Western Australia and state nomination from Victoria. So your experience of industry will not be submitted, but you still get visa because on CAPS, you can come without experience. Okay. Okay, so that's the answer for your question. So can I gain the points of my industrial experience in my visa? Are you short of points? I don't know. I'm not Just exactly go know about the on point. Department of Immigration website and there's some calculators there. Put your data there and see what your points are. Do it now before it's too late. Okay. Okay. Thank you. And answering that question, what need to start? Look, if you want to just dive into CAPS, just do it. Submit your papers to CAPS online. Do it today. Come with a video saying that I have a great aim to pass the CAPS and I will mix with Australian culture. I will do this and that. And just jump into the elite intern, not intern, elite preparation group. And you will see, you will be amazed at how much stuff you will get there. Okay. And Surely, sir, I will submit. another bunch of group of people who are like warriors. They just said, we going to pass this exam at any cost. We have made another smaller group in preparation group. That's called Platinum Group. Okay. What they're doing, they're talking, they're doing their own Zoom chats, and they're just pushing everyone hard to pass this exam. So there are significant amount of efforts going on in that group. So that group is only for those who are connected with me, and I know them personally, mean that I know what their husband do, what their wives do. I know everything. That's the connection that one need to make to progress with me. Right, sir. Okay, so just do it. And yes, I think we have some of our experienced pharmacists are joining today. I think Ms. Hamna is joined today. I was talking about her, and I think she joined as well. If it's right. Let's see. If you have any question, please ask. Otherwise, we'll go for the next one. No, sir. Thank you. Thank you. It's all done. Thank you, Saddam. Thank you very much for coming. Yes, Mr. Ahmed, your question is your text 10. If you can ask your question, please introduce yourself, come on camera, and say what you need to say. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. How are you? Alhamdulillah, sir. What about you? Yes, I'm all right. Are you sitting in some office or your home, or where are you? I'm sitting in my bedroom right now. Okay, that's good. That's good. You can ask the question. Yes, what is your burning question? Sir, I was also in the seminar which you held for the students of the University of Peshawar, and I talked about the letter from the Pharmacy Council, if you can recall. Yes. So, sir, I got the letter from the council that day, and I was going to apply for the skill assessment on that particular day. But you got the letter? Yes, I got the letter. Oh, mashallah, that's very good. That's very good. I have not seen someone doing so quick things. This is super exciting thing. And I was going to apply for the skill assessment on the same day, on the same particular day. I arranged the debit card, I increased the limit for that, and all that stuff. But the check came from that particular problem. The issue was that I have to upload the birth certificate for the no birth certificate. Why are you worried about the birth certificate? Just put the passport, just put the CNIC, and that's it. Oh, I was confused about that because my birth certificate is in Arabic, and so from that point I got confused. No, please don't get confused. If you don't have a birth certificate, if you have a birth certificate, I would not encourage people to do the birth certificate. I just ask them to do two IDs. One is a passport and one is the CNIC, which got English version or English name on it. That's two IDs enough for the CAPS. And I have made videos as well on this, how to submit, what to submit. Just forget about birth certificate. Okay, I just have to upload the passport in the place of that birth certificate section. Yes.
Okay, sir. About the CAPS preparation, if I saw, if I just want to ask, is it possible that I could clear the July intake if I do start preparation as soon as possible? Sorry, ask this, like say this, repeat this question. I could not listen it clearly. I was asking that, if that would be possible for me to clear the July intake if I start the preparation from now, like as Yes, soon as yes, this possible is if what I I was start the saying preparation. I was saying to one person before that 3 months is ideal preparation time. So it's Okay. like April, 7th of April today. Yes. May, 1 month, June, 2nd month, July, 3rd month. So 3rd month and 10 more days. So you got 3 months and 10 days, which is Yes. ideal time for anyone who hasn't studied anything. Yes. And the critical point, another confusion came from this point that to apply for the July intake in Pakistan, I have to get registered before the 10 July, before Yes, 10 June. yes, Sorry. yes, 10th of June or 13th of June, I think. Yes, yes. If I would apply for the skill assessment, is it possible that it In will 6 came weeks before the time, 10 in June? 6 weeks time, expect that CAPS will say yes to you in 6 weeks time. Okay. Okay, it stays on the website 8 weeks, but I know CAPS has introduced new staffing and they speed up the process. They will, or they have sent replies with yes assessment in 6 weeks. So let's say if 6 weeks completed by end of May, let's hope, then you Okay. will be having a time to submit your fee. And in case, worst scenario, if you miss out, right? If your assessment does not come, then it's not in your control, but you can try, Okay. isn't it? Yeah, I was just thinking that if I would put the assessment today with the expectation that it will came before the 10th June and I started a preparation for that, and just a scenario and the skill assessment didn't get passed before the 10th June. You know, What was my preparation? I need to say something here very loudly. I have written a big, strong email to APC. I was advocating pharmacists for Pakistan. I sent them a chunk of emails saying some dot points that they need to reduce this time frame of CAPS assessment if they can do it, because there is a huge interest of pharmacists in Pakistan want to do the CAPS exam, and the CAPS center was just started, right? So maybe they will give a special consideration for Pakistani pharmacists because the CAPS centers have started. They may give you assessment earlier. I have requested that if they can shorten that 8 weeks to 4 weeks, I have written that. Okay. If The seats you, for the July are vacant, still vacant. yeah, should be, yes. Okay. Why are you worried about the seats? We have 3 exam centers now. Because I was getting before getting the like 3 areas for the test, so that it was just in Islamabad and seat for that was full. So that's Now we why I have was 2 in just thinking. Islamabad, 1 in Lahore, and we are trying Yes. to get one in Karachi as well. So let's hope. Okay. So inshallah, sir, I have. Don't think about, you know, the Mr. Dhoni, MS Dhoni says something I really share in my group, that don't think about the results, and your voice is not coming, your voice is cutting. Okay. So don't think about the results before you start the preparation. Just start what you're doing, and then Yes. then leave the result for someone else. That's a beautiful God. Okay. So when you sending the papers, when you submitting pressing the button for fee? Inshallah, in a day or two. Inshallah. Why 2 days? Why not now? Why not finishing this call and do it now? Uh, mm, well, inshallah, I'm gonna do it in a day or two because I have arranged the The letter. money I is have coming from somewhere. assembled. No, it's not a money issue. It's more than of I'm just having a chit chat with my parents and Oh, I'm just come trying to on. convince Take them. action, man. Take the action. Take this opportunity. You've been guided by the right people. I mean, just take the action. It won't give you any regret if you submit your CAPS feed now.
Yes, yes, I am gonna submit it in a day or two, inshallah. And whenever I'm gonna submit it, I'm gonna send you a video and a screenshot of that. You can So send the I video have done it. now. Video is not restricted with your fee structure. You can send the video now. You need to show that you are Yes, having I intention. will send this You have a screenshot burning of the desire. You skill have assessment confirmation. Yes, sir, I have done this. okay. Okay, that's good. Thank you, sir. Thank Thank you you. for guiding me. Thank you. You take care. Okay. Next person is Wenky, Winky, right? Winky. Hi, sir. Good evening. How are Yes. you? Good evening. How are you, Winky? How are you? Where are you? Are you in Middle East or are you India or where are you? I am from Dubai, sir. Oh, Dubai. Okay, that's good. I remember. Actually, I am from India, but currently working in Dubai Yes, I remember from your last video. 3.5. Yes, sir. First of all, I would like to thank you for doing such a great action towards all the pharmacists all over the world, and especially the interviews what you are conducting. The way how you are encouraging us is really it's like I can say it's top notch, sir. Why? Because no one can do like this. Yes, I was calling those people. They're all busy. They're all working. And today I've just found that opportunity. Today is a public holiday. And I said, look, your voice is not coming. Your voice is stopped. Just check your mic. Uh-huh. Yes. Yep. Now we can hear you here. So that's something which uh, encouraging for me to talk to them because I was the one involved with them for last 12 months or more than 12 months. And it's good to see them, good to chat with them, and I was still guiding them for a few tricks and tips. As you can notice, the last person I interviewed was Andrew from Queensland. I was telling him you need to win the Intern Pharmacy of the Year award. That was my wish. And Luckmore Bunu from South Australia, he is already in the race of winning the Intern Pharmacist of the Year. So how much encouraging for that, for anyone who's listening, that a person who came to my webinar a year ago, they are now in Australia and they are fighting for Intern Pharmacist of the Year award. How happy would you be if you do this when you come here in Australia? And I will be very happy. I will Definitely, feel sir. that I'm the one who's receiving the award, although you will be the one who will be published. Sure. Your name will be publicly published in the newspaper or in the journals, in Australian magazines or Australian media will cover you, but I will be feeling that I win this award. So when I'm very confident that Mr. Luckmore can win this. He has a capability. He got a personality, and I wish him all the best. Yes. What is So, the question? yes, I have finished my skill assessment, and I am preparing for July already. But Yes. sir, the one question is, whenever I'm seeing the whole syllabus, I feel like overwhelming. Like I have confidence, I have that much confidence to crack, but at the same time, I feel like somewhat like can I do it or not? Why? Because syllabus is huge. So Syllabus is huge. Okay. the syllabus is huge, and I have three months to give in July. Look, as I explained to previous person as well, 3 months is good enough. And Vinky, your voice is stopping. Please check your mic. I think there's something. Yes. Yes. So look, 3 months is good enough with your work, with your job. You need to spend 5 to 6 hours daily. And in the last month, you may take time off from your job to give more. You need to do that. You need to apply for your leave to use the time for your education, for study. This is what Miss Hamna did when she decided. She straight away applied for 3 months ahead that I will be off on holidays. She basically said to them, I will be on holidays, but she was not holidaying, she was studying. So this is how she managed. So you need to make environment around you. You can't just say excuse that I'm working. I only have 3 months time. And so you make sure you plan your 3 months, 2 months working and study, and 1 month no working and study.
I already planned for 1 month, so I already asked my management to give 1 month holidays, and they are accepted. That's very good. Just do it. Why are you worried then? Sure, sir. People listen Hamna's video, listen other 3 people who passed the exam with me. The results just Yes. announced in March. I have a you know that the chat recorded. You can watch them. One girl is from India, one from Oman, and one was from Australia in Hobart. Just watch it and just do what they have done. If you are in my group, they have not gained anything else. They study the same stuff which we discuss in our group. You already in the group, I think. Are you? Yes, sir. I am already in. So what's the worry? You are in the elite group. Just use that all stuff there. It's your time. Sure, Don't sir. think that it's too big. Just think about you are too big and you can control this problem. Definitely, sir. It's your time, right? It's your time. Yes, You sir. should have a bigger desire. You should have a bigger why. Why are you doing this? Can I ask why you're doing this? Why you want to come to Australia? So it's my dream. I want to achieve it anywhere. So you want to live in the dream. You want to live in your dream to come to Australia, right? So what Yes, you will sir. do in your dream? Is your family coming in your dream or are you coming alone? Definitely along with my family. Okay, so you have a big desire. Yes, So sir. to I get want to something make big, it true. you need to compromise your current time. You need to sleep less. You need to maybe skip maybe work if you can ask your boss to give you some smaller shift. I don't know your circumstances is, but do something to make this happen. Burn your board and say to yourself that I will not sit in this exam again anymore. I will sit only once only. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Take care. Participate in the group more. If you participate in the group, just feel that they are like a family. Get a response from them. If they're not getting, just ask again. Look, I have asked a question. Nobody's answering me. Then they will answer your questions. Discuss more. You will feel that you are part of the party. All right. Okay. Take care. Miss Rukhsar Asim. Rukhsar, can I ask you to come on live talk and introduce yourself, please? Ji Rukhsar, how are you? Where are you from? Alhamdulillah, I'm fine. असल में मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा 5 मंथ का बेबी है, ठीक है। तो अगर मेरा कैप्स क्लियर हो जाता तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि वीजा में कोई मसला हो या किसी चीज में कोई हर्डल आए? थोड़ा सा On आप way अपना of Australia. इंट्रोडक्शन करा दो तो मेरे लिए आसानी होगी। क्या किया हुआ है, कब किया हुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा सा वो मुझे जानना जरूरी होता है। मैं 2019 की पास आउट हूँ फ्रॉम कराची। दैट्स गुड। यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। और वर्क क्या किया हुआ है आपने? क्या काम किया हुआ है आपने? हॉस्पिटल फार्मेसी का एक्सपीरियंस है। How many years? 6 month to 8 month से मैं कुछ नहीं कर मेरा। तो बेसिकली आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। इज इट राइट? 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस कैटेगरी होती है वो नहीं है आपके पास, जो चाहिए होता है एक्सपीरियंस लगाने के लिए, वो नहीं है आपके पास। मेरे पास आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और या तो आप कैमरे को ऑफ करके बात कर लें। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कांट लिसन टू यू, यू गेटिंग फ्रोजन फ्यू टाइम्स। जी 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 मैं ये कह रही हूँ कि मेरा हॉस्पिटल फार्मेसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। मेरी कैटेगरी तो बनी हुई है, रजिस्टर्ड फार्मेसी की जो लाइसेंस बनता है वो बना हुआ है, लेकिन जो मेरा नॉर्मल मैनेजर जॉब थी एक हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर कराची में, तो उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास 2 साल का। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि आपका 5 मंथ बेबी है और आपको ऑस्ट्रेलिया आके कैसे काम करना है। ठीक है, तो उसका आंसर ये है सिंपल, समवन नीड टू लुक आफ्टर योर किड, आइदर योर हस्बैंड, or if he's not there, then you need to arrange a daycare facility for
for your child, which will be paid Yes. by you. It is not government funded, so you need to be responsible for the charges. ओके तो सर ये अगर हस्बैंड तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो उनकी भी साथ मेरे साथ इमिग्रेशन के हाँ हाँ चांसेस हाँ होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये फैमिली का वीजा होता है जो फार्मासिस्ट को देते हैं लोग। 491 वीजा जो होता है, जब आप कैप्स पास करते हैं, जी जब आप जी इंग्लिश करते हैं, तो उसमें आप जी 491 जी वीजा, जो कि इस वक्त सबसे आइडियल वीजा है किसी भी फार्मासिस्ट को ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए स्टेट नॉमिनेशन में, उसमें फैमिली के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं चाह रही थी कि मैं नवंबर में टेस्ट अटेम्प्ट करूँ ना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं तैयारी तो मैंने अभी से शुरू कर दी है, लेकिन ज़ाहिर है 2019 की पास आउट हूँ तो मुझे बिल्कुल शुरू से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना और बच्चे की वजह से मैं थोड़ा कम टाइम दे पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल जब सेटिस्फाई हूँ तब मैं टेस्ट को Okay, अटेम्प्ट करूँ। I have तो I have अगर I मैं have an issue on असिस्टेंट this की फीस statement. I have a problem with this statement. When you जी say मैंने 2019 में किया और मैं बहुत दिन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कैप्स जो है ना, वो 3 महीने लग के कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो 26 साल पुराना ग्रेजुएट हो, चाहे वो 1 साल पुराना ग्रेजुएट हो। जी इट डजंट मेक अ डिफरेंस। सही नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है जब मैं वापस से खोलूँगी, रिकॉल करूँगी हर चीज़, तो वो सब खुद याद आ ब खुद जाएगा, सारी चीज़ें आ सब याद जाएँगी। आ जाएगा। लेकिन बस ये है कि टाइम कम मिलता है, उस वजह से मैं ये चाह रही थी कि जो है मैं जब खुद सैटिस्फाई हूँ, अगर मैं जून तक बिल्कुल स्टेबल हुई कि मैं नेक्स्ट मंथ दे सकती हूँ, तो मैं ज़रूर दूँगी, मुझे वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन तो एक मैंने कैप्स अपना माइंड ये असेसमेंट, बनाया था कि कैप्स असेसमेंट सबमिट कर दो आप। यू सबमिट द कैप्स असेसमेंट टुडे। जी, ठीक है, ऑनलाइन जाके सही, $1300 सबमिट कर दो। ठीक है, एंड देन कम इनटू माय सही, ग्रुप। ठीक है, कनेक्ट विद ऑल माय सोशल मीडिया। जब ये सब कर लो, वीडियो वगैरह कर लो, उसके बाद मेरे ग्रुप में आ जाओ, स्टडी करो। And ठीक है, if you're not working, if you're just managing your 5-month baby, I सही, I believe that you can easily manage 7 hours daily if you can. सही। Out of 24 hours, अच्छा 7 hours if you can manage on your study, why you can't do in July? Save 6 months of your time. Yes. So, इंशाल्लाह आई ट्राई बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह जुलाई में बैठ जाऊँ टेस्ट में। मैं ये पूछना और चाह रही थी कि असेसमेंट फीस अगर मैं अभी सबमिट कर देती हूँ तो वो कब तक वैलिड रहती है? मतलब मैं जुलाई में बैठूँ, नवंबर में बैठूँ, वो कोई मसला नहीं होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही अगले 5 साल तक भी कोई आपको नहीं पूछेगा पलट के कि आपने एग्जाम कब दिया है, कब नहीं दिया, कोई भी नहीं पूछेगा। देयर इज नो एक्सपायरी ऑन सही, असेसमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ और ये बताएँगे आप मुझे कि ये जो पीटी और आइल्स है, इसमें से क्या बेटर है कि मैं पीटीई, के कैप्स के बाद सिंपल इज क्या दैट। पीटीई का ज्यादा क्वेश्चन बात आगे लेके ही नहीं जाए। सिंपल इज पीटीई, जस्ट गो फॉर पीटीई। सही, ठीक है, आफ्टर कैप्स ना? मैं तो सबसे पहले पीटीई करवा देता हूँ सबको। मेरे सारे सारे जो वॉरियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पीटीई में जम मार देते हैं पहले, क्योंकि टाइम इज मनी। देखो, आपने कैप्स पास हाँ, किया जुलाई में, अगस्त की डेट में आपको रिजल्ट आया, ठीक है, और उसके बाद आपने पीटीई किया, तो आगे अगेन आपको शायद 1 महीना और आगे ले जाना पड़ेगा अपना केस। अगर आपने अभी पीटीई निकाल दिया, कल कल हुँ, पीटीई की डेट बुक की, और मई में जाके एक दिन जाके टेस्ट दे दिया, और आराम से 1-1 घंटा प्रिपेयर किया, अगले 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते आराम से पास हो जाएगा। हुँ, पीटी इज लाइक अ गेम where you need जी, to know the tips and tricks how to pass the exam. डॉक्टर हमना का वीडियो ओके, देखना आज ओके, जाके, जो आज मैंने रिकॉर्ड किया, उसने बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उसने ठीक है, कैसे तैयारी की थी अपनी फैमिली के साथ, अपनी जॉब के साथ, और उसने 18 मार्क्स लिए हैं। 80, उस 80 मार्क्स की वजह से उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले अपने इमिग्रेशन के केस के लिए, 10 एक्स्ट्रा पॉइंट। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, मुझसे आई सवाल गॉट इट। करते हैं कि मिनिमम क्या चाहिए हमको कैप्स के लिए, तो वो तो चाहिए 65, जो कि बहुत ही लो स्कोर है। लेकिन आर यू टारगेटिंग फॉर ए लो लाइफ? आर यू टारगेटिंग फॉर, मैं तो यहाँ पे सबको इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द राइट, ईयर अवार्ड जीतने की बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ और हुँ, बातें कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कि बस पासिंग मार्क्स करके निकल जाओ। यू नीड टू हैव सही, इम्प्रेसिव लाइफ, तो यू थिंक अबाउट द टॉप एंड। सही। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मेरा बस ये है आपसे कि इंशाल्लाह कैप्स क्लियर कर लेती हूँ मैं और सब चीज़ें हो जाती हैं, तो इंटर्नशिप जो है वो आप वो करते हैं
आप बुलाते हैं उसके लिए, मतलब आप बताते हैं कि इंटर्नशिप के लिए अभी यहाँ पे है, यहाँ पे करनी है, देखिए या वो हमने खुद करना होता मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में है? जी 6,500 साइट्स हैं फार्मेसीज की, ठीक है। इसके अलावा कोई 3,000 और साइट्स हैं जहाँ जॉब है, तो तकरीबन 9,000 कंपनियां हैं जहाँ पे जॉब मिल सकती है आपको। तो वाई यू जस्ट लुकिंग एट मी? सही। तो आप गाइड करते हैं इस बारे में? मैं गाइड करता हूँ। मेरे सामने आज जो मैंने इंटरव्यूज लिए आपने सुने? आज आज आपने कुछ टाइम दें, थोड़ा सा मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ी सी इज्जत दें, कुछ सुने जाके उस पर क्या बातें हुई हैं। आज सुबह से मैं मैसेजेस भेज रहा था ग्रुप के अंदर, भाई सुन लो आके, तो आप सुने जाके उसमें क्या बातें हुई हैं। उसमें सारे लोग जो हैं वो लोग हैं जो मेरे किसी ना किसी मैसेज की वजह से कुछ ना कुछ फायदा हुआ है उन लोगों को। तो सही आपको भी हो जाएगा। आप कैप्स तो पास करो, जी जी जी। आप come to the party first before asking this question. हम्म, These people didn't ask this question, you know. Dr. Hamna didn't ask that कि मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, आप मुझे जॉब दिलाओगे नहीं दिलाओगे. No one asked this question who were successful with me. They were just damn serious about सही। their caps. So just burn your boats, do the caps, and everything will be all right. इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you. तो आप फीस कब जमा कर रही हो, मुझे ये तो बता दो जाने से पहले। इंशाल्लाह आज या कल में मैं इंशाल्लाह जरूर कर दूंगी, तो मैं आपको रिसिप्ट पेपर्स भेज रेडी है, स्कैन हुआ हुआ है? नहीं, बस उसी के लिए जो है ना, वो स्कैनिंग और वेरीफाई जो अटेस्ट करवाना है ना, टेस्ट किसने बोला ट्रांसक्रिप्ट वो करने को? Who said to you to get the test? किसने बोला आपको टेस्ट करने को? नहीं करवाना। नहीं करवाना। आप मुझे फॉलो नहीं करती, इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे आके फोरम पे ये बोल रही हो कि टेस्ट भी मैं कराना है, आप मुझे नहीं फॉलो करती। आप फॉलो मैंने तो करो मुझे। तो उसमें था कि करवाना है, तो किसने हो बोला है? सकता है कहाँ अगले पढ़ा है 6 आपने? महीने कहाँ पढ़ा है भाई आपने? वो जो एक ग्रुप पे मैं ऐड हूँ वो आपके ना, कौन सा ग्रुप है? वो कौन चला रहा है वो विद ग्रुप? हु इज रनिंग दैट शो? इरफान ऑस्ट्रेलियन फार्मा इन्फो 2023। तो उसमें किसी ने बोला है कि आपको टेस्ट कराना है? जी जी, नहीं और भी HEC का टेस्ट करवाना है। नहीं नहीं, तो वो कौन से टॉपिक की बात हो रही है? वो बात हो रही होगी विटासिस के लिए, जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस करना है उनके लिए वो रिक्वायरमेंट है। कैप्स के लिए तो कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, बस ये फिर तो मैं, मेरे पास फिर हमारे सारी ग्रुप में चीजें 3 तरह कंप्लीट की है बातें हो रही इंशाल्लाह। होती हैं। उसपे 3 तरह के लोग हैं उसपे। एक फार्मेसी टेक्नीशियन वाले हैं, एक इंडस्ट्री वाले हैं, और एक कैप्स वाले हैं। कैप्स का तो बहुत ही आसान जी प्रोसेस है। जस्ट स्कैनर पे डालो, 1 बाय 1 3 डॉक्यूमेंट। अपना जो फार्मेसी काउंसिल का जो पेपर है ना, आप कराची से हो तो सिंध फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट स्कैन करके उसमें बिठाओ, अपनी डिग्री की कॉपी बिठाओ स्कैन करके, और मार्कशीट की, और अपना पासपोर्ट स्कैन करो दोनों साइड से, और CNIC स्कैन करो। बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, एंड जस्ट पे द फी। सही सही सही। ठीक है ठीक ठीक है है। सर, तो थैंक यू सो जुलाई मच इंशाल्लाह। जुलाई का टारगेट करो और पास द जुलाई एग्जाम, और PTE की डेट बुक करो। और अपने हस्बैंड को भी बोलो PTE की डेट अगर कर लें तो उनका भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे तुमको, 5, अगर उन्होंने भी अच्छा स्कोर कर दिया एज ए स्पाउस इन योर एप्लीकेशन। ठीक है ना? तो अच्छा, ये सारी चीजें हैं, कर लो और ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। जॉब है मजे करो यहाँ के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ओके, टेक केयर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद उजैर आमिर। कैसे हो भाई आप? आप काम पे थे, मेरे मैंने नजर आ रहा था। यू आर वेयरिंग अ ग्रीन टाई। you have turned, your turn is ready, please. उजैर, आपने सवाल करना है तो पूछो आप प्लीज। उजैर आप म्यूट पे हैं। यस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? क्या हाल है भाई आपका? Alhamdulillah. How are you doing, sir? यस, आई एम वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी एक्साइटेड टू सी यू हियर। Sir, I would like to thank the way you motivated and inspired. So
I 2 days ago just applied for the assessment of my documents. Yes, I know everything. And, Yes. I entered in the group, and Yes, I'm a bit confused. many congratulations to you. You enter the group. Yes. Sir, you shared material there, so Yes. I'm a bit confused whether should I start from Lippincott CPR or that material slides you shared. Okay. I So think it's a best huge answer material. for you is spend 1 hour and watch the webinar that we did how to pass the exam just few days ago in our YouTube channel. In that webinar, we were just focusing on how to pass the exam. So you listen that conversation, and that was just a question answer session, like how we're doing the question answer session today. So everyone who was there from that group who has submitted the exam assessment and they were studying. So they were only those group people were allowed. So everyone was there from that group and discussing that, sir, मैंने अभी CAPS assessment जमा किया, मैं कैसे start करूं? Same question like what you asked. There were 3-4 people asked the same question, and we answered that in a very polite way, very slow way. Just watch that and make your notes, and it will be hell of an easy thing for you. I can tell you now straight away. I can tell you a few things right now. Look, you know the recalls portion there, recall portion. Yes, Have you sir. seen the recall like May or 22 or March 22? Print those first. Go to the print shop, print those, and start reading those. Finish those from recalls. Okay. Okay. Get a read of all the recalls. Complete that reading in maybe 10 days, and discuss that in and ask the question. Look, I have gone through the recall. I have these problems. Someone will start talking to you. That means that you have covered nearly every like 500 questions, and then refer where you get stuck. Refer means open your Lippincott or open your CPR and find out the answers there. Okay. Right. We have another group going on in the same group. They are very like they are having their own strategies. They are studying and sharing their discussions nearly every second day or every third day, I think, or maybe fourth day. So if you can request, if you really want to join them, just ask in the group that I want to join that Zoom group. We call it Platinum group. Just ask that. In the group, sir? Should I request in group? Yes, in the group. There are a few people who are leaders there. You can ask them, look, I'm new. Can I join with you? Just show them you are a good person. You are a friendly person. They like you and they ask you to come in there as well. Okay. Or just ask the question. Just ask this question. But the answer for your question is answered 3-4 times in that webinar. So just watch that webinar from my YouTube. It says how to pass the CAPS exam. Okay, sir. Or I will send you the link. Just open it and watch it while you having your dinner. Just watch it and grab everything what we have discussed. I was with Umar. Umar was acting like a helping person to assist because Umar has passed the exam in November 22 with me, and he was telling his experience that, look, you need to do this, you need to do this, you need to do this, you need to study this, you need to study this first, you need to study it later, but in 1 month time you finish this. He was telling everything like that. Right. Sir, I'm working 10 hours a day. Okay. So 3 months are enough, or should I sit in November? Look, ask for a leave in the last month. छुट्टी मांग लो. ठीक है. आखिरी महीने में काम नहीं करना, पढ़ाई कर लेना. अभी के टाइम में एटलीस्ट 5 घंटे पढ़ लो. Right. थोड़ा सा कम सो लो. Okay. That's you need to do. कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये खोने के लिए नींद खोलो अपनी, या बॉस से बोल दो कि मुझे काम कम कर दो, मेरा रिड्यूस कर दो वर्कलोड, मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बात कर लो बॉस से. ठीक है. Okay, you need to modify your living style and increase the working style, study style here. And consistency होनी चाहिए.
हैबिट बनानी है अभी पढ़ने की थोड़ी, वो भी हैबिट बढ़ानी है। हाँ, उनका हमना का वीडियो जाके चेक करो, हमना ने किस तरह पढ़ाई की है। आज मैंने उनसे बात की है। Just watch her. Listen, she was reading in the breaks, in the lunch break, in the work. She was reading in the mall. So that's how she passed the exam. सुबह उठते ही पढ़ना शुरू कर देना, रात तक पढ़ते रहना, कुछ होश नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन आज क्या है, 190 वीजा लॉन्च किया था उसने। लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी उसकी। Okay, sir. Thank you. Take care. Thank you. Thank you for coming. Okay, sir. Madhiha, please come live, introduce yourself and ask your question. Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। मदिहा, आप कैसी हो, क्या हाल है? Alhamdulillah. My name is Madiha and I am from Karachi. I have done my pharmacy in 2011. Right. And MBA in 2015 and then MPhil in 2017. Okay. And I have overall 10-year experience in regulatory affairs, Okay. pharmacovigilance and business development. Okay, that's good to know. Yeah. I have already in your group and I get much insight about different things which I didn't know previously. But I am a little bit confused about skill assessment of Vitesses because it seems that regulatory affairs is not much included in that. I'm not sure about that. Okay. Do you want to come to Australia? That's the first question. Is it really important for you? Yes. Okay. Do you want to work in Australia? That's another question. Yes. Okay. I can tell you right now, the jobs that you're going to come and work is not available for the regulatory part that you have experienced 10 years in your country, right? So the answer is that you need to come to Australia to work as a community pharmacist. If you are ready for that, why don't you do the KAPS right now and come here on your KAPS? I don't have any issue in giving KAPS, but I don't want to join community pharmacy. Okay, what is stopping you? What is actually hurting you to think about you are a community pharmacist? Nothing, but I'm interested in regulatory affairs. Okay, if nobody will give you a job in regulatory affair in Australia, then what will happen to you or your family? Would you be staying as a jobless person? No. Then my question would be again, would you be a community pharmacist in Australia? I need to know what is stopping you, what is actually bothering you to be a community pharmacist, because community pharmacy is the true essence of a pharmacist, a true reflection of a pharmacist profession. My interest is more towards regulatory. I know. I have listened that your demand that you need to be a regulatory person because you worked 10 years as a regulatory person. But again, if you're coming to Australia, do you know the jobs, where the jobs are for you or for anyone who's coming to Australia? Do you know that? I'm not sure. Okay, so I'm the person who's guiding you, and maybe if I calculate the number of people is more than 800 people right now. So I'm actually giving you a information sitting in Australia with my vast experience and giving you a guidance that jobs are available in Australia, but not in regulatory area, not in regulatory department. Jobs are available in regional Australia for community pharmacists. That's why Australia need pharmacists. Otherwise, there will be no, if, for example, if we close this chapter right now for community pharmacists, then it's hardly for anything available for any overseas pharmacist. So anyone who's coming to Australia, look, people change their careers. And you are a graduate of pharmacy. You have done another pharmacy degree and you did another business degree, right? And you can use that all knowledge in this area as well. Although the experience that you have of that
regulatory part will not be used straight away, but you can be in the compliance team of community pharmacy company, maybe. But to become a registered pharmacist is first hurdle that you need to go through to say that you're a pharmacist. You cannot say yourself as a pharmacist in this country without becoming a registered pharmacist. Do you know that? Yes. Okay, so for that sake, you need to come out of that environment that you may think that, oh, I cannot go and serve a customer on the counter, or maybe I need to be on the desk working in a closed office environment. Is that the reason why you don't want to do a work in community pharmacy, or any other reason? I'm not interested actually in community pharmacy, retail, or like that. I'm more towards industrial side, Okay, that's like fine. That's R&D or regulatory or something like that. okay. That's good enough that you're Research interested. is one of the another domain which will be interested, might be, because I'm already involved in research writing and all that. Sorry, what is the last thing you said? I could not I'm understand. involved in research writing and Okay. publications, Okay, and maybe just try Vitasis if you think that you have a passion for that area. Vitasis may have an option to give you a successful outcome for your assessment, and then apply for a visa. And then when you're going to come here, then you need to apply for, you need to first of all find out where the jobs are, right? Because as experienced pharmacist for many years, I don't know where the jobs are, how you're going to fit in the jobs, because I have not seen those jobs here which you are looking or you are targeting. So that's going to be a bit hard part for you to live here just to find out those jobs, which probably very hard at the moment in Australia. okay. Okay. Thank you. Vitasis is the right way for you to apply, and if you need any documentation help, let me know. I can send you some sample letters. You can design your letters and submit to Vitasis. Vitasis do assessment. Sometime they do urgent assessment, which takes 2 weeks time. And if you put the application in urgent case, they will give you outcome in 10 days. And then do the PTE, and then apply for state nomination, and then apply for your visa with your family. That's how you can come to Australia. Okay. Okay, and I have few more like experience for people who come here on industrial experience. They are jobless here. They're just sitting there in a hope that they may find a job. They're not working. Okay. So that's why I just asked you a blunt question, that what you will think when you will come here. Would you, rather than sit and wait and maybe you will go and work in a close by profession or something close to similar profession, which could be a hard question for you to think that why you come to Australia. You are coming for a better life, right? Isn't it? Yeah. Better life for yourself, for your family, or for your kids, right? Obviously. All right. So what's your husband do? Can I ask? Yeah, he's a chemical engineer. Okay. Okay. Has he seen his jobs where he gonna be working? Has he explored? In Australia? Yes. Yes, he's applied on various job on Seek or other platforms. I am not sure about that, but he's looking for a job. If you are aware about the Seek, have you searched jobs for your area? Yes, I have already applied, but mostly they refuse because I'm offshore. I'm not Okay. here. So you have seen the jobs, right? Where the jobs Yes. are? Can you please tell me where the jobs that you have seen? Which area? Which state? In Sydney, Melbourne. Okay. New South Wales. Okay. These places I have seen. Okay. So you know that the visa that you will be getting will be like 4-9 visa, which is a state nomination visa.
Yes. So do you think that state nomination visa will allow you to come and work in Sydney? No. Okay, what about Melbourne? No. I think we have to stick to that state in which we are nominated for. Yes, so that state nomination is basically attracting overseas qualified people to the demand area, especially the regional areas, not in the main city. So that's why they're giving these visas as a state nomination. So that's again going to be a challenge. How are you going to manage the time? And in 491 visa, when someone get a 491 visa, they have 3 years time to work, stay in country, and in 2 years, out of those 3 years, you need to work somewhere that you can show that you have worked in this country and you have paid the tax for 2 years. On the base of that pay slips and everything, then you proceed for your permanent resident. So that's another big question, big worry for you when you're going to land here. If you got a visa, you will get a visa, no problem. But when you're going to land here, and if you not in that area where the jobs are, again, a question will come to you. What job you will do? What work will you do? Right. So that's something you need to decide right now. That's why I was always say to everyone that go for KAPS, get the KAPS through, get your visa sorted, get those 2 years things sorted, and then you can rejoin your passion after that. There's no problem with that. You need to be flexible with that. Yes. Thank you. Okay, thank you. Okay, take care. Okay, Mujib, Anjum, how are you? Hello, how are you? I'm good. Just a second, let me turn the lights on. Hold a second. I was trying to get my baby asleep. मुजीब आपको कैमरे पे आना पड़ेगा अगर आप बात करना चाहते हैं। जी जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। So yeah. Is it there? Can you see me? No, I can't see. I can only see the green screen. Oh, hold on. Now you can see. I can see you right now. Yes, sir. Oh, perfect. That's fine. First of all, I mean, it's an appreciation call kind of a thing. I have been included in this group by one of my students. I'm an assistant professor. I'm working at a university. I'm a PhD. साहब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। एक सेकंड एक तो और आपकी आवाज बहुत लो है। मुझे चीजें कुछ देख लेंगे, एक सेकंड। अच्छा जी, माइक की थोड़ा सा ना स्लो बोलिएगा क्योंकि हम आवाज जो है ना थोड़ी सी क्लियर नहीं है, हम समझ नहीं पाएंगे आपने क्या बोला। अब देखिए कुछ आवाज बेहतर हुई? बेहतर है, यस आवाज बेहतर है। चीजें आप कंटिन्यू ओके, दैट्स फाइन। या सबसे पहले तो मैं ये कह रहा था कि इट्स काइंड ऑफ एन एप्रिसिएशन थिंग दैट यू आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। थैंक यू। And I have been invited by one of my students in this group. और मेरे लिए एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है। I mean, I was about to leave and then I thought कि no, it's something worth being there. और मैं देख रहा हूँ कि मेरे couple of students जो हैं वो ऑलरेडी जो एक बच्चा आपसे बात करके जा चुका है, अब्दुल हक वेटिंग में है, वो मेरे बाद शायद बात करेगा। तो मैं एक टीचर हूँ, PhD हूँ मैं। I have been in Germany since 2018 and I came back because I had a job here. So I mean ये आपको पता ही है जो सिचुएशन चल रही है, हालात है, उसके मुताबिक हर बंदा जो है ना वो सोचता है कि what are other options which you need to explore. So I have a couple of questions quickly. I mean, what are the possibilities about people who are really old? Like I'm an old person, I'm 43. So I did my graduation in 2001, so that's B Pharm. That's आपकी 44th birthday कब है? That'll be next year. Okay, 44 से पहले अगर आपने वीजा सबमिट कर दिया, you are in. Okay. Is it good for you or is it bad? Because 44 is the maximum cutout. Okay. 44 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। Okay. So वीजा के लिए आपको कैप्स को पहले क्लियर करना है। आप कैप्स क्लियर कर लीजिए,
जुलाई का इम्तहान पास कर लीजिए, असेसमेंट डाल दीजिए आजकल के अंदर, कैप्स का एग्जाम पास हो जाएगा आपका। और जैसे ही पास हो उससे पहले पीटी कर लीजिए, एंड देन अप्लाई फॉर स्टेट नॉमिनेशन। स्टेट नॉमिनेशन 3-4 स्टेट आपको फौरन दे देंगी, 2 हफ्ते में विक्टोरिया दे देगी, 2 हफ्ते में जैसे ही आपका आया आप वीज़ा लॉन्च कर दें। अपनी 43 ईयर की जो 44th की जो बर्थडे उससे 5-6 महीने पहले सबमिट कर देंगे, यू आर इन द क्यू, यू विल नॉट। इज इट नॉट द 45th और 44th? आई थिंक 44th, आप देखें, चेक करें सही से जाके, 44। या ये मुझे बस एक छोटी सी ये कंफ्यूजन थी। आई हर्ड अबाउट, आई मीन देयर वर कपल ऑफ ओपिनियंस, बट आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम अ ओपिनियन पर्सन पे ना हु इज जाए एक्चुअली। सर, ओपिनियन पे तो ब्लैक एंड व्हाइट में सब चीज लिखी हुई है सामने, आप देख सकते हैं। ऐसे ही है। या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट ये कोई उसमें नहीं है कि आई मीन इफ यू आर अ फार्म डी और अ बी फार्म दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस ना। फार्म डी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी बी फार्म होता है, यहाँ 4 ईयर या दैट्स फाइन। अगर आपने फार्मेसी फार्म बी फार्म की हुई है, दैट्स स्टिल ओके टू सबमिट योर कैप्स असेसमेंट। दैट्स फाइन। या और दूसरी बाकी, आई मीन आई एम ऑलरेडी ऑन योर यूट्यूब चैनल एंड प्रोबेबली आई विल वॉच द वीडियोस देयर एंड होपफुली आई विल गेट उससे मोर ज्यादा इन्फॉर्मेशन। आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अगर आप मुझसे फायदा उठाना चाहते हैं। आपको ना मेरे श्योर बताइए, लिंकअप करना पड़ेगा। मेरे सारे जी बताइए। हाउ मेरे लिंक्डइन पे आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी होगी कि हाँ मुझे आपके बारे में पता हो, ओके, और आपको मेरे बारे में पता हो, ठीक या है। आई विल डू दैट इमीडिएटली। और मैं टिकटॉक फार्मासिस्ट हूँ। बहुत सारे लोग टिकटॉक का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, कहते हैं ये कोई डांस वांस नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। I'm actually in favor of that. If you have some abilities, then you should showcase them. TikTok is the latest trend in Australia for by pharmacy professional, or pharmacies are telling their things to their audience through advanced, quick pace of communication. I start TikTok in December or November 22, because I was watching one pharmacist called Mustafa in Australia, and he do things like such silly things in a nicer way to educate people. I said, okay. And his things are actually flying on this TikTok like anything. And when I start my first video on TikTok, I got some enormous messages, and I thought, wow, it works. Because an unknown person coming to me and saying that how this visa thing work, what you're saying, and I said, wow, so I will just use this TikTok to everyone. I will introduce the TikTok in a different way, and every time when I talk to someone, I just say, look, I'm a TikToker. You need to be on TikTok. You need to have a TikTok app, and just click, and in a way that you will see my video or my message every day, maybe 2 or 3 times a day. Yeah, I think on your YouTube, every link is there. I do have TikTok on my yes, please just I will send you sure, I'll follow. That's fine. I will send you those links. Just click and just join, and that's how you know I mean, what is happening. I break the news. I'm a news breaker. I'm a news jerker, basically. I declare whenever the news is coming, I just put on there so people get to know firsthand. Like yes, like 1 week ago, Victoria announced that they will do the quickest state nomination assessment in 2 weeks time. So as soon as I saw in the morning, I just declared that on my TikTok as well. So everyone in my network, people, they know that, oh, Victoria is ready for welcoming pharmacists as well. So that's how people know. Otherwise, if we don't pass this information to our friends or our pharmacist friend, how they will know this? Yeah, it's very important. You know, the biggest hurdle is because you see a couple of videos, I mean, who the people have done, and probably they are really older as well, and then a lot of questions because you are spending the time. That's why the main thing why I jumped in was just to appreciate you as well, because you're spending a lot of time, and maybe you are asking you are being asked the same questions every now and then, that how I should start and where should be the preparation materials and all that stuff. But of course, to be patient and to be with the people and to answer those questions who you have answered a lot of time, it takes a lot of courage, and of course it's really an appreciation. Yeah, I'll connect with you. I'm also a teacher myself and a motivator, so I would, and I do encourage my students to be on this role to change their lives forever. And it's if this is an opportunity and people like you are helping them, they should. Yeah, I do want to take a chance, of course. I mean, I know that I'm already a mid-aged person, but there is not an ending in my life. Yeah, not an issue, because you can see Mustafa in one of my videos. He did CAPS in November 22. He's 50-year-old, and he did CAPS
He did his undergraduate, his pharmacy graduation in 1997. Wow, that's a motivation. 26. If you haven't watched that video, please Yeah, go I will search- now. Yeah. Just search that and just feel his passion. That how was, and I was like, how much time you spent on your passing the KAPS? He said, just 2 months. I said, wow, you just passed the KAPS exam in just 2 months? And he said, yes, I just spent 2 months, but I just cleared my mind that I have to sit in the exam and I have to pass this exam. That's it. And I consistently studied 5 hours every day. That's it. That's what he did. He was not studying 6, 7, 8 hours. He just studied 5 hours, 2 months, 60 days, and bang, and passed the exam. First attempt. At the age of 50. The biggest thing which you are telling the people is being clear that you want to do it or not. And that's it. If you make the decision already, you are already 50% is done almost. Like, and I think there is no exam in the world that somebody, if you want to pass and you can pass, they're just silly questions. Don't need to be. If you have passed pharmacy exam while being in Pakistan, that you can pass any exam of the world. I can better than that. I mean, I did my and जब आप इरादा करें, मैंने PhD की बाहर की और मुख्तलिफ सख्त किस्म के environment में की, तो we can do it. That's really nice. So बस अब मैं quickly just to wind up and give other people opportunity. आपने एक तो PT बताया कि वो करना है. PT कर लें, उसका ऑनलाइन पढ़ाई कर लें. पाकिस्तान में अगर है तो PT की डेट्स बड़ी देर से मिल रही हैं. जस्ट बुक द PT राइट नाउ. जुलाई का एग्जाम के लिए कैच कर ले. अपनी असेसमेंट आज कल में जमा करा दें. Still you got a chance to get the assessment by end of May. Submit your exam fee by 10th of June for July exam and sit in the exam. हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के अंदर भी एग्जाम सेंटर खुल जाए. बहुत जोर लगा रहे हैं. लाहौर में आ गया ना, आई थिंक लाहौर में आ गया, इस्लामाबाद में आ गया दूसरा सेंटर, और उसके पीछे मास्टरमाइंड मेरा ही था. मैंने ही पीछे लग के ये करवाई थी. तो आई रियली प्राउड के आई डिड सो मेनी थिंग्स. और आपको थोड़ा सा मैं बता भी दूं, 2020 से पहले एग्जाम नहीं होता था पाकिस्तान में कैप्स का. या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इट्स ट्रू. आई मीन बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं जो कि हम यहाँ पे बैठ के दे सकते हैं और आपको अपनी बॉर्डर नहीं छोड़ने पड़ रहे. दैट्स अ बिग थिंग. 2008 में होता था, उसके बाद बंद कर दिया गया था. आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीजन था, लेकिन 2019 में मेरा एक मुलाकात का मौका मिला अपने दोनों हाई कमीशंस के कंट्रीज से. ऑस्ट्रेलिया पे जो ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान जा रहे थे और यहाँ वाले, और उन दोनों से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया उनकी आंखों में आंखें डाल के. मैंने कहा, सर, we need to know why Pakistani pharmacists need to go to Dubai for this KAPS exam. And they said, you tell me why we don't conduct this exam. I said, this is your legislation, और ये आपकी तरफ से रुकावट है. आप देखो इसको, आप उसको खुलवाओ. And I gave them a writing letter, like an agenda, कि ये आप करवा देना. आपके लिए क्या काम है, आपके लिए क्या बड़ा काम है. उन्होंने कहा, yes, we can do it. In March 22 में एग्जाम सेंटर पहली दफा खोला गया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में. बिल्कुल सही. ठीक है, तो उसके बाद बिल्कुल सही ऐसे ही है. अभी इट्स अ ह्यूज एफर्ट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड. आपको पता है ये छोटे से छोटे एमएच और ये वो सारे एग्जाम देने के लिए भी लोगों को, जब जिस वक्त में हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब हम फैसला लेने की पोजीशन में थे, जिसकी वजह से हमें और डिफरेंट किस्म के डिसीजंस लेने पड़े, तो उसकी प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस यही है. और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप जैसे लोग जो ना वो अभी भी आप बता रहे थे पिछली थोड़ी देर पहले कि मैं ईमेल करूंगा कि लोग जो है ना वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान से ज्यादा. तो आप जी, मैंने ईमेल कर दिया कि असेसमेंट का पीरियड छोटा कर लो. ये 8 वीक क्यों करना है पेपर चेक करने में? व्हाई यू कांट डू इट इन 4 वीक्स? इसमें है क्या? आई मीन इसमें कुछ भी नहीं है. आई मीन आपके मेन डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, एंड दैट्स इट. सब पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज कितनी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज है. उनकी जब आप लोड करने जाते हैं तो उनके पास लिस्ट आ रही होती है सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज. बिल्कुल आ रही है. तो उनको पता है कि ये सब जेन्युइन पढ़ाई करने वाले लोग, इंग्लिश स्पीकिंग फार्मासिस्ट आ रहे हैं. तो ऐसा क्या, मैंने उनको ईमेल लिखी, kindly reduce this 8 weeks time to 4 weeks, so many pharmacists can sit at the exam, and that will help Australia, because they will come, they will work here, they will give tax to Australian government for next many years. That's true. I mean, just to let you know about myself, I not only that I have 15 years of teaching experience, I have a community experience of 8 years as well. I have been in the consulting plus for the area, so I love to work on the bench. So it's a community is my kind of a lifeline. So it's not an issue. Very nice. Doing something like that. So very big thank you to you again. I mean, for the things, and of course I'll follow all the links which you have, and I will watch the videos to keep myself motivated and on the path. Hopefully, inshallah, and I'll do the assessment. And just like yesterday, I'll try to
post the video as soon as I do the assessment and let you know that yes. Easy message I- मुझे कीजिएगा and I will interview the group. Okay, thank you. Yeah, thank you very much. Thank you So very much. kind. Thank you. Assalamu alaikum. जी अब्दुल हक, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे सर मुनीब ने बात की है, मेरे टीचर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं और ये मतलब इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं कि अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपॉर्चुनिटी से अवेयर करते रहते हैं। सर माय क्वेश्चन इज थोड़ा ऑस्ट्रेलिया सा अपने नाउ। बारे में बताओ, आप कहाँ पे हो, थोड़ा सा मुझे याद आ जाएगा। सर आई एम अ फार्मेसी स्टूडेंट हियर एट UAS लाहौर। I attended your webinar couple of times. Okay. Sir, my question is like Australia nowadays is the topic of discussion, right? Sir, I am a pharmacy student, so I have to make my mind to reach at a decision, to make any decision. So will things be the same in the coming years? Because, for example, me, I will be graduating the next year. So will things be the same in the trend will be the same in the few coming years, like 4 to 5 years? देखिए अगले 3 साल तक तो कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, जितना यहाँ पे वर्क फोर्स चाहिए। 3 years 3000 5000 और बेबी 6000 जॉब्स जो हैं वो अभी फिलअप होंगी स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि कोई 1000-2000 फार्मासिस्ट एकदम पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं होने वाला। आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है, कुछ लोग प्रोसेस स्टार्ट किए हुए हैं अभी, तो उनको भी आते 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 टाइम लगेगा, 1 साल लग जाएगा, हो सकता है 8 महीने लग जाए। तो आई डोंट थिंक 5000 pharmacy jobs will be filled. No, we will still have a chance. Right. Because Australian जो फार्मेसी प्रोफेशन है ना, वो उसका स्कोप ग्रो हो रहा है। ये फॉलो कर रहे हैं कनाडा का जो वर्क स्टाइल है, उसको फॉलो कर रहे हैं। कनाडा इज वन ऑफ द लीडिंग फार्मेसी प्रैक्टिसिंग स्टैंडर्ड्स एट द मोमेंट, लीडिंग वन, दे आर द लीडर्स कनाडा। तो हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं उसमें सारे कैनेडियन प्रोफेसर्स आए हुए होते हैं, जो लीडिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो एडवांस चीज़ें बता रहे होते हैं। तो जो स्कोप वो बताते हैं, तो उसको स्कोप को देखते हुए तो ऐसा लगता है फार्मासिस्ट अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो सारे काम करने लगेंगे फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मेसी में, तो उस वक्त और फार्मासिस्ट चाहिए होंगे। तो अभी जो जॉब्स खाली हैं पहले हम वो तो फिलअप कर लें, फिर जो और जॉब्स निकलेंगी तो उसमें भी आप फिटर हो जाएंगे। सर एक चीज पूछने कि मतलब एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आप अभी क्या चीजें रेकमेंड करेंगे या क्या एडवाइस करेंगे कि अभी से बंदा कुछ चीजें करना शुरू कर दे अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप्स? काम करो, आप जाके जॉब करो, जाके करो शाम में, डू सम वर्क एटलीस्ट 3 hours a day, 4 hours a day। पैसे नहीं भी मिलते हैं, डजंट मैटर, जस्ट गो एंड वॉलंटरी वर्क इन अ फार्मेसी, get that environment and start working on your English. Make your English to a proficient language level. Try to hit PTE with 880 number, so you can get 20 points on your visa application. Although कि एक्सपीरियंस का कुछ नहीं मिलेगा आपको, चाहिए भी नहीं, लेकिन मिलेगा भी नहीं। जहाँ एक्सपीरियंस का कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ इंग्लिश का पॉइंट उठा लो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अभी लाहौर में 2 हमारे साथ हैं स्टूडेंट, उन्होंने ये किया, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, फ्रेश ग्रेजुएट है लाहौर यूनिवर्सिटी के, हस्बैंड एंड वाइफ है, नई शादी हुई है दोनों की। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीटी दबा के तैयारी की और टका के पीटी में नंबर लिए और 90 या 80 लिए, कितने लिए दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, मैक्सिमम पॉइंट जो ले सकते हैं वो लिए। और अभी डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंट विक्टोरिया की डाली है उन्होंने, नो एक्सपीरियंस, परमानेंट रेजिडेंट। 49 पे भी नहीं गए, वो सीधा 190 पे गए, विच इज़ द टॉप वीज़ा, जहाँ पे आपको मेडिकेल कार्ड मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, बिकॉज दे planned their English, they planned their KAPS, they were in touch with me more than 1.5 years, I think. So they have managed it.
उनकी एक की इंटरव्यू मैंने किया है, और इंटरव्यू नहीं, उसने खुद से रिकॉर्डिंग करके डाली हुई है। आप मेरे यूट्यूब पे जाओ, वो बात कर रहा है आपको। शायद आप लाहौर, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? सर मैं युवा से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। ओके, वो है लाहौर यूनिवर्सिटी से। तो आप उसकी वीडियो देखो जाके, एंड यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, व्हाट ही डिड एंड हाउ ही get help from the resources which I shared with him. बुक पढ़नी है तो CPR एक बुक होती है, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू। हाँ, उसका जो MCQ पार्ट है ना चैप्टर के एंड में, वो एग्जैक्टली। सारा पढ़ के खा जाओ। वो ऐसे कर लो जैसे वो तुम्हें पेज नंबर याद हो कि कहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है, ऐसे कर लो उसको, बिल्कुल सर। ठीक है। और लिपिन कॉर्ड को भी अगर दोबारा से पढ़ लो अच्छे से। लिपिन कॉर्ड में श्योर। जो चीज़ जहाँ लिखी है, इतनी इतनी तुम्हारी कंट्रोल होना चाहिए उस बुक के ऊपर कि अगर लिपिन कॉर्ड खोल रहे हो, उसमें से जो टॉपिक है ना, कोई लेट्स से कोई हार्ट का टॉपिक है, तो इंडेक्स को देखिए बगैर यूं करके खोल के दिखाओ कि यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज द लेवल दैट यू नीड टू अचीव इन द बुक्स, ठीक है ना? यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू दिस। यस और ये उसी वक्त होगा जब आपने वो बुक 6 दफा पढ़ी हुई होगी। आपको इंडेक्स बिल्कुल। खोले बगैर यू कैन फील कि अच्छा ये इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू गेट टू दैट लेवल। और एक बुक और है मेरे पास, ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक, आई कैन गिव इट टू यू, ठीक है? सर इट विल बी अ वो भी, हुज फेवर सर। हाँ, वो भी मैं दे दूंगा। आप ग्रुप में हो मेरे या नहीं हो? तो ग्रुप, आप कौन से ग्रुप में हो? मेरे किसी ग्रुप में हो? सर मैंने आपको यूट्यूब पे फॉलो किया हुआ है। ओके, किसी ग्रुप में आओ, मेरे मेरे ग्रुप में आओ। मैंने कल एक ओपन ग्रुप स्टार्ट किया है, उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट लिंक को क्लिक करो और आ जाओ उसके अंदर। उसमें कोई 500 लोग आ गए हैं कल 8 घंटे के अंदर, ठीक है ना? तो उस ग्रुप में आप आ जाओ। उधर भी मैंने कुछ अभी चीज़ें देनी है, अभी मैं सिर्फ लोगों को बुला रहा हूँ उस ग्रुप के अंदर, ताकि लोग बहुत सारे ना मिस गाइडेड बहुत हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती, मिलती नहीं है सही से। तो मैंने बहुत पहले क्लोज ग्रुप रखे हुए थे कि भाई ये क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करोगे तब मैं आपको अंदर आने दूंगा, ठीक है? उसमें मेरा टाइम बहुत लग रहा था, तो मैंने अभी सोचा कि यार इस वक्त इतने लोग गलत एकेडमीज की तरफ कोई चला जा रहा है, कोई वहाँ पैसे फेंकने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक ग्रुप खोलता हूँ और उसमें कहता हूँ जिसको आना है आ जाओ, कहीं से भी हो, पाकिस्तान से हो, आ जाओ उस ग्रुप में, ठीक है? और यस सर। उसमें मैं कुछ चीज़ें दूंगा, आप उसको फॉलो कर लो। मैं उसमें वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको फॉलो कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, जी जी। सर काइंडली अगर आप लिंक शेयर कर दें। Okay, let me see the link if I can share it here. Then anyone who's not in the group, just jump in, come into that group. इसका नाम मैंने रखा है ऑस्ट्रेलिया वेलकम फार्मासिस्ट, ऐसे करके। श्योर। एक चक्कर है उस ग्रुप में ना, एकेडमी वाले भी घुस जाते हैं, वो अपनी एकेडमी की चीजें बेचना शुरू कर देते हैं उस ग्रुप के अंदर। आई हेट दैट। अभी किसी ने अपने वो डाल दिए कि हमारे, लेट्स नॉट जोक, कल भी कोई एकेडमी वाले अंदर आ गए थे उसके अंदर, तो मैंने उसको, मैं नहीं चाहता कि कोई एकेडमी की चीजें बेचे उसके अंदर ना, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं तो वो। आप मतलब यूं कर दें कि आप सिर्फ चैट जो है वो अपने लिए अलाउ कर दें कि सिर्फ हाँ, आप उसमें मैसेज। मैंने उस जब 2-3 लोगों को डिलीट किया, भगाया मैंने उस ग्रुप में से, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी दैट कि जब मैं एक वॉलंटरी सर्विस दे रहा हूँ पूरी खुल्लम खुल्ला, तो व्हाई दे आर कमिंग इन दैट ग्रुप एंड सेलिंग देयर स्टफ। ठीक है, आई नीड टू पुट दिस ऑन एडमिन देन। आई एम जस्ट शेयरिंग, आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है? और ओके इसको सर। ना हम लाइव भी देख रहे हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है उसका जो लाइव, सॉरी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका एक लाइव सेक्शन है, उसके अंदर ये हमारी चल रही है। तो उसके कमेंट्स में भी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दिया है, ठीक है ना? तो यू कैन श्योर ज्वाइन। सर। तो मैंने लिपिन, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक उस ग्रुप में दे दी है मैंने, मुझे अभी याद आया, मैंने भी देखा है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ वो बुक उसके अंदर। मैंने उसमें लिपिन कॉर्ड भी दी है, उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी दे दी है उसके अंदर। तो वो बुक्स किसी को खरीदने वरीदने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना उसको, ठीक है? आपको मैं थैंक यू भेज सर। देता हूँ, वरना इस चैट में मैं अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यस सर इट विल बी। और इसको आप पिक कर लो और मुझे मैसेज करना, इस कन्वर्सेशन का मुझे रेफरेंस देना, एंड देन आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे थैंक यू सो स्टूडेंट हैं जो विलिंग होते हैं, तो उनको मैं ग्रुप में डाल ले आता हूँ। तो उससे होता है कि आपको पता लगता रहता है कि क्या हो रहा है। और जस्ट फॉर एडवाइस के
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 2-3 चीजें वो अभी से आप देखना शुरू कर दो, अभी से सोचना शुरू कर दो कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हो, ठीक है। उसको उसको करने के लिए उसमें 2-3 चीजें हैं कि ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन जो है यहाँ का, एबीसी टेलीविजन जो है, उसको लाइव आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब पे या उनके फेसबुक पेज से या उनके वेबसाइट से। तो स्टार्ट वॉचिंग एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन न्यूज़, एबीसी न्यूज़। तो आपको ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश जो है वो आप उसको यूज टू हो जाओगे सुनने के लिए, समझ में आने लग जाएगा। वरना होगा ये कि जब ऑस्ट्रेलिया लैंड करोगे तब उसको सुनना शुरू करोगे, इससे बेहतर नहीं कि अभी से सुनना शुरू कर दो। स्टॉप वॉचिंग एनी CNN channel, any BBC channel. Start watching Australian channels, television channel, which tell you Australian way of English. 40478869 ये मैंने नंबर लिख दिया अपना 0401478869। तो इस पे आप मैसेज कर देना मुझे and then I will bring you to the group. Thank you so much, sir. Thank you for your kind words. Most welcome. Any more questions? If anyone got a desired question, please let me know. Please raise your hand or unmute and ask the question. Is anyone there to ask the question? Please let me know. Sir, can you share your number in the group chat or meeting chat? I am unable to see your number. Really? अच्छा, मैंने किया है everyone in meeting. Okay, everyone in meeting. Okay, sir, got it. Yeah, I just shared. अच्छा, जब आप मुझे कांटेक्ट करें ना, सिर्फ हाय और मैं फार्मासिस्ट हूँ ये ना लिखना, आप अपने बारे में लिखना ताकि मुझे पता हो, और इस चैट का रेफरेंस देना। और अगर हो सके तो CV और अपने जो सोशल मीडिया उनसे कनेक्ट कर लेना, तो इट विल बी ग्रेट। Can I ask one more question? Yes, please. Yeah, I just went to the immigration site and I think it says it's 45. So what's the authentic one? I mean, there are जो many. जो आपने देखा फिर वो 45 ठीक है, मेरे पास yeah. पुरानी इन्फॉर्मेशन होगी, उससे मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। Yeah, क्योंकि वो जनरल वीजा ही हम उसके लिए एलिजिबल होते हैं ना, 190 जो है आई थिंक 190 या 491। या सो 190 की तो 45 है, दैट्स इट। 190 की 45 है या 190 जी, ठीक है, दैट्स फाइन। 190 45 is good, but try to do it now. Why no, yeah, I mean it's perfectly fine. I mean it's not thank you not to take for your time. fixing that. I will also update my knowledge as well. That's good that you clarify that. Thank you, that's very good. Thank you. Yes, anybody has a question? I think you are not looking at chat questions. There is one person who is asking what is the certainty of getting the visa after cracking the caps. There is no chance of rejection until unless you are a criminal, you have a bad history of police or anything like that. Visas are easy to get. Yeah, someone else is asking whether you need to have an experience for 190 visa. No, अभी मैंने थोड़ी देर पहले explain किया। अभी मैं जब अब्दुल हक से बात कर रहा था, I was explaining a story of a pharmacy, a fresh graduate from Lahore University and his wife. They both passed the KAPS. They both did the English in very good number in PTE and apply for this 190 visa without experience. So I just explained that state nomination के जरिए उन्होंने 190 apply किया, directly permanent resident. So that's possible. थोड़ा सा ऊपर जाके भी देख लेते हैं, join the webinar.
Assalamu alaikum. Can one overtime and complete the ITP earlier than 10 months? How much overtime? ये किसने पूछा है सवाल? मुस्तनीर अकमल साहब ने. ओके ओके, आप हैं अभी या चले गए? मेरे ख्याल से चले गए, मेरे ख्याल से मुझे नजर नहीं आ रहा. इसका आंसर ये है कि देखिए 45 आवर्स पर वीक आपको अलाउड होता है काम करना मैक्सिमम. ठीक है, तो उस स्पीड से अगर काम करते हैं तो 10 महीने के अंदर हो जाते हैं ये आवर्स. तो 10 महीने के अंदर आप कर सकते हैं. ठीक है, और वीकेंड पे हाई मिलती है. अगर वीकेंड पे रोस्टर किया जाएगा तो आपको हाई पे मिलेगी. आप ज़बरदस्ती वीकेंड में आके बोलेंगे बॉस मुझे काम करना है, वो कभी भी नहीं देगा आपको जब तक कि आपकी ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है ना, काम आपको उसी वक्त देंगे जब आप केपेबल होंगे, स्मार्ट होंगे. हो सकता है आप इतने स्मार्ट हों कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया जाए, दैट्स योर लक. लेकिन 45 मैक्सिमम आवर्स हैं जो आप कर सकते हैं वीक के. उस हिसाब से 10 वीक्स के अंदर, सॉरी 10 महीने के अंदर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है. और 54,000 पर, यस दैट्स ट्रू, यस. कंडीशन टू अर्न, कंडीशन अर्न का मतलब मुझे नहीं पता क्या मतलब है, लेकिन ये पे स्केल है जो कि फार्मेसी अवार्ड रेट के हिसाब से इंटर्न फार्मासिस्ट को दिया जाता है थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ प्रीटी स्टैंडर्ड. देयर इज नथिंग मोर, नथिंग लेस. सर वो 54,000 कंडीशन 491 के लिए है. इफ यू आर ग्रांटेड 491 वीजा when you are applying for permanent residency, the condition, one of the condition that you have to earn yearly salary of $54,000 Australian dollar. ओके, तो सत्तार आप कहाँ पे हैं, किधर से बात कर रहे हैं? सर मैं आपसे मेरी बात हुई थी, अस्सलाम वालेकुम, 2-3 दफा बात हुई थी. मैं बंडरबर्ग हॉस्पिटल में करंटली हूँ. बंडरबर्ग, अच्छा. तो आप कैमरे पे आप आए हैं, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा. मैं एक मिनट, I hope it's visible to you. ओके, अस्सलाम वालेकुम. जी वास्ते. अच्छा, आपका नाम याद आ गया. यस यस, आप हमारे जॉब्स ग्रुप में. जी 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 जी. यस यस यस, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है 54 वाला, ये मैच नहीं होता है किसी का, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये क्वेश्चन है? नहीं सर, मैच होता है, बट वो आप एक लड़की को समझा रहे थे 451 का जो वीजा है उसकी कंडीशन जिसमें 2 साल आपने टैक्स पे किया हो. हाँ. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशन कि आपको 54,000 सैलरी आपका क्रेडिट होनी चाहिए. तो वो सैलरी होनी चाहिए, तो वो उसी वक्त होगी ना भाई. मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि रेगुलेटरी जॉब जो है, आई डोंट नो कि वो कहाँ होंगी, किधर होंगी, लेकिन कम्युनिटी फार्मेसिस्ट की जॉब तो है, आपको भी पता है. ठीक है, तो एग्जैक्टली बहुत है. why not someone come and choose the pathway which is easier and then graduated, जो भी है ग्रेजुएशन खत्म करके फार्मासिस्ट बन के एक्सपीरियंस लेके फिर अपने इंडस्ट्री की तरफ जहाँ भी जाना है, रिसर्च में जाना है, तो उस वक्त उनके पास एक फार्मासिस्ट आपका का नंबर भी होगा, तो कि जो कि उनको एडेड वैल्यू देगा, एडेड बेनिफिट देगा जब वो उस तरफ जाएंगे. मैं ये कहना चाह रहा था उसमें. That's correct. ऐसा ही है. कैप्स जब तक किसी ने अप्लाई नहीं किया हो, जब तक वो पढ़ना ना शुरू कर दे, they think that it's too big thing, पर ऐसा होता नहीं है. when you are in, then वो easy लगता है, मतलब हो जाता है, आराम से हो जाता है. बिल्कुल. डर बहुत होता है एक तो कि पता नहीं क्या है, क्यों पढ़ना है, क्यों तकलीफ में बैठना है हमको, क्यों पेन उठाना है. ये सबसे बड़ा एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है. तो लेकिन आपको इस कंट्री में आना है तो उस चीज़ से बहुत बेहतर है कि आप घर पे रहें और आप जॉब तलाश करते रहें और लोगों से आप पूछते रहे यार मेरी जॉब के लिए कुछ करो. उससे बेस्ट नहीं है कि आप एक स्किल ऐसी उठा लें जिसकी डिमांड हो, आपके साथ लगी हुई हो, जो आपको कहीं भी ले जाए और आपको जॉब में एक्सेप्टेंस हो. तो व्हाई नॉट डू दैट पाथवे. एग्जैक्टली. आजकल तो बहुत है, वैसे भी कोई भी कर सकता है, मतलब फार्मेसी की जॉब्स तो बहुत ज्यादा है आजकल. इट्स टू इजी टू गेट. जी हाँ, आपको एक्सपीरियंस है तो आपको जंप इन करके उनको बताना चाहिए था, ताकि उनको लगे भाई एक और ऑस्ट्रेलियन बैठा हुआ है जिसने ये काम किया हुआ है. और वो ऑलरेडी एक्चुअली आप बात करें तो मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए फिर मैं खामोश रहा. मैंने जस्ट चैट में मैसेज छोड़ा. हाँ, लेकिन वो बड़ी उन्होंने अपना इंटरेस्ट का ज़्यादा जाहिर किया. मैं उनको बताना चाह रहा था इंटरेस्ट भी एक चीज़ होती है, लेकिन एक ज़रूरत भी होती है, एक नीड भी होती है. आप जब इस कंट्री में आते हैं तो Exactly. मेरे सामने 2-3 एग्जांपल्स हैं जो इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं और वो जॉब उनको नहीं चाहिए, तो दे स्ट्रगल फॉर 3-4 months जस्ट फॉर जॉब. और फिर आखिर में ये हुआ कि वो फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब पकड़ी जाके उन्होंने. तो व्हाई नॉट, इंडस्ट्री का सारा कुछ करके आए यहाँ पे और फार्मेसी असिस्टेंट का काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको एक कंडीशन पूरी करनी है ये वाली. एग्जैक्टली ऐसा ही है. इज इट फ्रूटफुल? नो, आई डोंट थिंक सो. नो ऑफ कोर्स नो. तो अगर वो खातून क्या नाम है उनका, अगर वो सुन रही है तो प्लीज कंसिडर दिस पॉइंट.
we are not promoting and we are not getting money from government to promote everyone to go to work in community pharmacy. ऐसा कुछ नहीं है. Yeah. Is just for everyone benefit, right? True. Yes, so that's very important. Thank you, Sita. Hopefully, Bundaberg में हमारे एक दोस्त हैं, उनकी एक फार्मेसी है, फेजल टीम नाम है उनका, उनकी कम्युनिटी फार्मेसी है शायद, या दूर कहीं एक जगह है बंडरबर्ग में या बंडरबर्ग के करीब करीब के एरिया में. आपने मुझे नंबर दिया था व्हाट्सएप पे, आपने मुझे सेंड किया, मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया, बट सोच रहा था जब एक 3-4 महीने यहाँ पे लगा के उसके बाद कम्युनिटी का एक्सपीरियंस लेने के लिए मे बी मैं उनको कांटेक्ट कर लूंगा. 1-2 घंटे वीकली अगर मैं उनके पास गुजारूं तो इट विल बी बेटर फॉर मी एग्जाम के लिए. जी जी, अच्छा होगा. बात कर लीजिएगा, मिल लीजिएगा जाके, कम्युनिटी का थोड़ा बहुत आपको वो बता देंगे क्या करते हैं. बिल्कुल, स्टोर्स हैं अपने इधर न्यू साउथ वेल्स में और बाकी जगहों पे. इंशाल्लाह करूंगा सर, से कांटेक्ट करूंगा. साउथ अफ्रीकन ओरिजिन से हैं वो. मैं नहीं, फेजल टीम की बात कर रहा हूँ वो. अच्छा, ओके. अच्छा, किसी ने सवाल किया है, चलें ठीक है, थैंक यू सितारा आपका. ओके सर. ये किसी ने सवाल किया है जिसपे नाम नहीं है, कोई नोट कोई है, कंपनी का नोट है कोई, मोबाइल पे नोट से बात कर रहे हैं. आप कौन हैं? अगर आप बात कर लें तो अच्छा है. सर, व्हाट इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड फॉर PR वीजा? कैन वी गेट स्कोर, एक्स्ट्रा स्कोर ऑफ मास्टर्स डिग्री? And one more question, if a spouse is just a primary, is not good in English, doesn't count in score. आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जो भी हैं आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लें. अनम्यूट, आस्क, म्यूट. आपका नाम क्या है और आपके पास से मोबाइल का कंपनी का नाम आ रहा है? हेलो. देखिए, MPH का अगर कोई करता है तो उसके पीछे कॉस्ट कितनी है, पहले तो ये देखें MPH की कॉस्ट क्या है. MPH कोई फ्री में तो नहीं करा रहा, MPH को पैसे देने पड़ेंगे. तो बेहतर नहीं कि आप अपना पढ़ाई करें उधर कैप्स की और पाक आ जाएं इधर. तो स्पाउस का अगर इंग्लिश नहीं है तो मेन एप्लीकेंट का अगर तगड़ा स्कोर है तो वो काफ़ी होता है पॉइंट लेने के लिए. एग्जैक्टली मुझे नहीं पता पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं इमिग्रेशन पर्सन नहीं हूँ, तो आई डोंट नो द आंसर फॉर दैट. द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू चेक ऑन डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन वेबसाइट. ठीक है, होपफुली यू गेट द आंसर. Okay, I'll put you back on mute. You're not interested to talk. That's fine. Anyone else here who want to chat, who have a question? This is the last 5 minutes. We can finish the program then. मैं हूँ अगर. Okay, please. Question. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. हमजा, क्या हाल है आपका? जी सर, मैं ठीक. अच्छा सर, मैं अभी 10th सेमेस्टर में हूँ, PharmD के ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, इस्लामाबाद. ओके, कैमरे पे आ जाओ भाई अगर कोई मसला नहीं. जी. और कितना बाकी है कोर्स? अभी मेरे 3 मंथ हैं फाइनल्स में ना. 3 months? जी. Oh wow, okay. नियर टू कंप्लीशन. अच्छा, जो मुझे पूछना ना, मैं 2 चीज़ों में बहुत स्टक हुआ हूँ. एक मेरा जो है माइंड ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा जो है ना एक चीज़ और जो मुझे प्रॉब्लम कर रही है वो उसमें हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए ना, फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूरोप कंट्रीज के लिए. तो इन दोनों में मैं स्टक हूँ. ये नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा पाथवे चूज करूँ. इधर गो टू ऑस्ट्रेलिया अवेल द फुली फंडेड स्कॉलरशिप. आप चाहते क्या? What do you want in your life? कम्युनिटी फार्मासिस्ट मेरा पैशन है, इंटरेस्टिंग होगा. तो फिर
स्कॉलरशिप का क्या रोल है उसमें? यही डिसाइड नहीं हो रहा एक्चुअली। वहां पे भी मैंने एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से ना, जी जी। तो वो भी उसमें काफी बता रहे होते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, काफी ज्यादा आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिल रही होती है, अच्छा फ्यूचर है वो भी, तो इस वजह से वो भी मुझे ना अच्छा बात पे लग रहा है वो भी। स्कॉलरशिप करके आपको तनख्वाह मिलेगी, ये मतलब है इसमें? डॉलर जी जी, मिलेंगे, तो उस डॉलर डॉलर्स। को कमा के आपको डिग्री मिलेगी, मतलब डिग्री तो नहीं मिलेगी, उस पैसे मीन को लेके मास्टर आपको टू डिग्री मिलेगी, पीएचडी। ये मतलब है, ये गेन है उसका, डिग्री मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ये गेन है उसमें, ये मतलब। जी जी, पैसे की मेन गेम है। तो डिग्री स्कॉलरशिप का की ये अमाउंट कौन काफी सी ज्यादा डिग्री होती है, है डिग्री कौन पीएचडी सी में है? उसमें यही फार्मेसी के रिलेटेड पीएचडी, फार्मास्यूटिक्स। और कौन सा कंट्री है? ये स्कॉलरशिप होती है इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के नाम से ना, यूरोप में। कौन सा कंट्री है, विच कंट्री? इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है या कोई और लैंग्वेज यस, वाला? नहीं यूरोप है, उसमें ज्यादा यूरोपियन लैंग्वेज ही बोली तो जाती है, लेकिन जो कोर्स लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होगी। उसको कौन समझेगा? इंग्लिश से दूसरी लैंग्वेज कैसे करोगे आप? मगर जो मास्टर या पीएचडी होती है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। ओके, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद जॉब मिल जाएगी वहाँ पे? ये भी आगे प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर है। तो प्रॉब्लम, थोड़ी सी पैसे मिलके प्रॉब्लम में खड़े होना, इससे बेहतर नहीं है कि थोड़े से पैसे खर्च करके ऑस्ट्रेलिया आके काम करो, आके जहाँ पे काम सीधा जॉब मिलेगा आपको? ये भी है, कैन मीन आई यही जंप दो इन? चीजें थी जो प्रॉब्लम मुझे कर रही थी। जहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी। अभी इतनी सारी कहानियां सुनाई हैं हमने, आज सुबह से लेके शाम तक इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज लिए हमने उन लोगों से। वो मैंने किस लिए लिए हैं? वो इसलिए लिए हैं, बताने के लिए लिए हैं कि पहली बात तो है ना, मास्टर्स करना और एमपीएच करना, और ये सब पुराना वे था ऑस्ट्रेलिया आने का। ये वाले वीजे जो खुले हुए ना 491 और 90, ये कभी नहीं खुले हुए थे पहले, सही। ठीक है? ये पहली दफा खुले हैं। तो इस वक्त मुझे शायद यूट्यूबर का और एक्टिव हो जाना चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो यूरोप में जाके कहते हैं ना, नीदरलैंड में वर्क फोर्स शॉर्टेज है, और कनाडा के अंदर फार्मर्स चाहिए, और वहाँ आ जाओ। इस तरह की मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि मैं इस तरह के बारे में बताऊं कि यार ऑस्ट्रेलिया की फार्मेसी में जॉब खाली है, आ जाओ आ जाओ, इस तरह की मुझे बनानी चाहिए। तब शायद लोगों को समझ में आएगी कि लोग ज्यादा मोटिवेट हो जाएं। मेरी लॉजिक क्या है, मेरा मतलब क्या है कहने का, कि जॉब खुली हुई है, जॉबें पड़ी हुई हैं, वीजे खुले हुए हैं, आ जाओ आ जाओ। तो ये पहले नहीं था, सही है। ये पहले नहीं था। मैं 20 साल से ज़्यादा हूँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, मैंने नहीं देखा, जैसे कहते हैं ना कि इतना ओपन डोर्स फार्मासिस्ट के लिए। तो जब मैंने थोड़ा बहुत लोगों को बताना शुरू किया, तो कुछ लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई। फिर थोड़ा बहुत लोगों को मैंने बताना शुरू किया। जब मुझे पता चला 20 कितने 2 लाख वीजा देने वाली गवर्नमेंट, मैं धक करके रह गया। नवंबर 22 पे मुझे न्यूज़ पता चली, मैंने कहा, ये भाई 2 लाख स्किल्ड वर्कर को वीजा दे रही है गवर्नमेंट, खुल्लम खुल्ला दरवाजे खुले हुए उन्होंने स्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो अगर मैंने ये मैसेज नहीं दिया, तो आई विल बी वेरी सेल्फिश विद माय प्रोफेशन, कि भाई इन अ वे कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, सेल्फिश वहाँ भी हो जाऊंगा, और सेल्फिश आप जैसे लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाऊंगा। तो मैंने फिर रोल प्ले करना शुरू कर दिया, द ब्रिज बिटवीन employers here, demand where the demand is, and people where they want to come to this country. अब आप पाकिस्तान से हो, आज हम उर्दू में बात कर रहे हैं। पहले मैं उर्दू में बोलता ही नहीं था, मैं जनवरी एंड तक मैं कभी उर्दू में कन्वर्सेशन नहीं करता था, ये फरवरी के मिड तक भी। लेकिन एक कोई लेडी थी जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया मुझे उर्दू में बोलने पे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो अगर इंग्लिश में बात नहीं कर सकती हैं, तो वो बात ही नहीं करेंगी मुझसे। तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उर्दू में बात नहीं करते हैं, तो लोग बात ही नहीं करेंगे हमसे। तो फिर मैंने उर्दू में बात करनी शुरू कर दी, ठीक है? तो ये इस लेवल पे मैं आ गया। मतलब मैं कभी भी इंग्लिश में, मैं कभी भी, आपने मुझे कैमरे पे नहीं देखा होगा, मिड ऑफ फरवरी से मेरी कोई भी वीडियो है ना, पहले वो मैं सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। उर्दू मैंने बाद में इंट्रोड्यूस की अपने बात करें, उर्दू हमारी अपनी ज़बान है। तो अब आपसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, यार ये हमारे जैसा ही बंदा है, हमारी तरफ से बोल रहा है, तो यस आपको एग्जैक्टली। ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही होगी बात। तो मैंने नोट किया था, जब मैं इंग्लिश में बोलता था ना, तो लोग सुनते थे
लेकिन असर नहीं लेते थे। लेते थे, 2-3 थे जो असर लेते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम भाग जाते थे। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो दैट्स व्हाई आई चेंज ऐसे द मीडियम टू उर्दू। का मतलब ये नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं टिका के इंग्लिश बोल सकता डेफिनेटली हूँ, मैं टिका के बिजनेस इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं मिनिस्टरों के साथ बैठता हूँ, मैं पता नहीं कहाँ बैठता हूँ, बोर्ड मीटिंग्स में बैठता हूँ। लेकिन अभी मैं बिल्कुल लेमैन की तरह एज ए पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान आपको बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जॉब्स है यहाँ पे, आप कैरियर अपना स्टार्ट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से बाहर आने वाले हो, जी जी जस्ट प्लान योर कैरियर फॉर ऑस्ट्रेलिया। इवन के मैं यंग फार्मासिस्टों को मेट्रोमोनल एडवाइस भी दे देता हूँ। यंग फार्मासिस्टों को उनको कहता हूँ कि शादी करना ना तो किसी फार्मासिस्ट के साथ शादी करना। उसका फ़ायदा ये है कि वो आपके प्रोफेशन की होगी, ठीक है। आप जब इस कंट्री में आओगे ना तो आप देखोगे यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं, फार्मेसी गिल्ड का प्रेसिडेंट हुआ या पीएसए के जो प्रेसिडेंट हुए, वहाँ उनको देखोगे ना, उनकी तरह फैमिलीज को देखोगे तो आपको लग रहा है अच्छा वो भी फार्मासिस्ट है, उसकी वाइफ भी फार्मासिस्ट है। सारे टॉप नॉच लोग जो है ना उनके दोनों लोग फार्मासिस्ट हैं। वो वहाँ कैसे पहुंचे हैं? एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं अपने कैरियर के अंदर। तो ये बात जब मैं किसी को करता हूँ ना तो लोगों को हंसी आती है, ये लोग समझते हैं पागल है, ये फालतू की बात कर रहा है, ये हमारे रिश्तेदारियों की बात कर रहा है, बरादरी की बात कर रहा है। लेकिन मैं एक एडवाइस देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बात सुनो नहीं सुनो, आपकी मर्जी है। लेकिन जिन्होंने सुनी है मेरी बात पिछले 10-15 सालों में, बहुत सारे हैं, इंडियंस हैं मेरे दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त हैं जिन्होंने बात सुनी है, एंड दे आर मल्टी मिलियनर्स इन दिस कंट्री एट द मोमेंट, मल्टी मिलियनर्स। बिकॉज एक अर्निंग थी, दूसरी भी बरसत आ गया लाइफ में, और वो जब दो मिल गए ना तो वो समझो वो हो गए, डॉन बन गए अपनी इंडस्ट्री के। तो दैट्स हाउ कैरियर्स बूस्ट है इन दिस कंट्री। खाली जॉब नहीं, एंटरप्रेन्योर बन गए, जॉब क्रिएट करने लग गए। और जब आप किसी को बताते हो ना कि मैं फार्मासिस्ट हूँ इस कंट्री में और मेरी वाइफ फार्मासिस्ट है या मेरे घर में एक और फार्मासिस्ट है, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है, उस बंदे की वैल्यू ही कुछ और होती है। जब किसी के सामने हम बात करते हैं, किसी मिनिस्टर के सामने जब बात करते हैं ना, या किसी और इंडस्ट्री के या स्टेक होल्डर के सामने जब बात करते हैं, तो वहाँ पे एक इम्प्रेशन ही डिफरेंट होता है। तो ये जस्ट एक बात कहीं से कहीं चली गई इस वजह से कि यू सेड दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ यूनी, दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट दैट। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी आपका हाथ खड़ा है, आरपीएच है, लेकिन नाम बताइए आरपीएच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आप कौन हैं? और अगर सर मेरा नाम बहुत अच्छा नौशीन है होगा। जी जी, और मैं लाहौर से हूँ। ओके। और सर मैंने फार्मेसी किया 2015 में सरगोदा यूनिवर्सिटी से, और मेरा ऑलमोस्ट 2 to 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है कम्युनिटी फार्मेसी का, एंड देन इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है मेरा रेगुलेटरी अफेयर्स में। तो फिलहाल जो मैं एमफिल कर रही हूँ LCW से फार्माकोलॉजी में। तो सर already I have applied for Norway authorization as a pharmacist, but आपके webinars जो हैं वो मैंने couple of days से लेना start किए हैं, तो I have been motivating myself for Australia। तो आपका नाम क्या है? नौशीन नाम है आपका? जी सर मेरा नाम नौशीन है। नौशीन, कैमरे पे आके बात कर सकती है मेरे से? श्योर सर। ओके, प्लीज कम। अभी एमफिल चल रहा है या जॉब भी चल रही है? कैन यू प्लीज टेल मी। सर एमफिल भी और एमफिल के साथ जॉब भी। और अभी फिलहाल मैं जॉब industry के में काम कर आवर्स रही क्या हूँ। हैं? जॉब के टाइम कितना? इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कितना है? 3 साल हो गया या कम है? नहीं सर इंडस्ट्री का मेरा ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और 5 2.5 इयर्स 5 इयर्स yes sir, ओके और 2 to 2.5 इयर्स का मेरा कम्युनिटी फार्मेसी का भी है। ओके। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या समझ में आया? जो इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, तो क्या एम सर कुछ बनाया आपने? क्या सोचा है कुछ करना है? सर मैं एक्चुअली मैं स्टक हूँ बिटवीन नॉर्वे एंड ऑस्ट्रेलिया। नॉर्वे नहीं जाओ, नॉर्वे से तो इधर आ रहे हैं लोग, कितने मेरे ग्रुप में जो नॉर्वे से इधर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। ओके
जान छुड़ा के वहाँ की अंग्रेजी को दूसरी लैंग्वेज, नॉर्वेजियन यस लैंग्वेज में सर, कन्वर्ट करने के लिए उधर लोग अपनी जी जान छुड़ा के कान पकड़ के इधर भाग के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। सर, उधर यही एक प्रॉब्लम है कि आपको पहले 1 और 1.5 इयर्स वहाँ पे एक नॉर्वेजियन लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है, और फिर उसके बाद कहीं जाके आप पहले इंटर्नशिप सिटीजनशिप मिलती है वहाँ पे, डू यू नो? जी सर, सिटीजन बनाते हैं उस कंट्री का, आपको सिटीजन जी बनने जी सर, वो सिटीजन आई थिंक 3 इयर्स के बाद आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। और उसमें एक्सपेंस कितना है, आपका पैसा कितना खर्च होगा? सर वैसे वो ऑस्ट्रेलिया से जरा कम एक्सपेंसिव है, मतलब आप कम है? वहाँ पे जाके जी कम है। Okay. मैंने जहाँ तक उसको देखा है ना, आई थिंक वो कम है। लेकिन अभी आपने बोला कि आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो व्हाई डोंट यू पुट अ केस एज ए इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट राइट नाउ फॉर विटासिस एंड अप्लाई फॉर द वीजा? सर मुझे उसका प्रोसेस आइडिया नहीं ठीक पता। है, आप मेरे मुझे ग्रुप में आ जाओ, आप मेरे ग्रुप में आ जाओ, आपको सारी चीजें मैं दे दूंगा हाथ के अंदर, सर ये मैं लो। ऑलरेडी ग्रुप में हूँ एंड मैंने आप मुझे आपको मैसेज करो कौन हो आप, नाम बताओ, ये आरपीएस से तो मैं नहीं पिक कर पाऊंगा आपको। जी जी मुझे नाम भेजो, अपना सीवी भेजो, और ये बताना कि आज हमने डिस्कशन किया आपसे, ठीक है? ओके और मैं आपको सारी चीज़ें हाथ में दे दूंगा कि ये लो, आप मैच करो अपने डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर है कि नहीं है, पासपोर्ट है कि नहीं है, तो आपको शायद अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट HEC से सर्टिफाइड कराने होंगे, वो एजुकेशनल सर मेरे डॉक्यूमेंट। सब हुआ हुआ है। तो बस आपको बस पुटअप करनी है केस, विटासिस को अर्जेंट फीस दो $1600 की अगर करना है। लेकिन अभी मेरे साथ एक और साहब आए हुए थे, सद्दाम, मोहम्मद सद्दाम नाम था उनका, ठीक है? वो इंडस्ट्री का कर रहे थे मेरे साथ, तकरीबन 1 महीने से अपनी सारे पेपर रेडी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। आखिर में पता ये चला कि विटासिस जो है ना, वो अर्जेंट बेसिस पे असेसमेंट करनी बंद कर दिया उन्होंने। 10 दिनों में जो वो कर रहे थे ना, 16 दिनों में $1600 लेके वो कर रहे थे, वो नहीं, उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो पा रही थी। अगर वो करते नॉर्मल वे में तो 5 महीने में उनकी असेसमेंट आती। 5 महीने वो असेसमेंट लेते हैं विटासिस के। तो Can I pitch in for a minute if you don't mind? यस यस प्लीज, यस। अर्जेंट बेसिस पे बेटा से सभी भी करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी फीस इतनी है पाकिस्तान में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वहां से आप उतनी ज्यादा फीस एट अ टाइम अपने कार्ड से पे नहीं कर सकते। इफ यू आर रिजाइडिंग आउटसाइड, यू हैव यू ई कार्ड और समवेयर एल्स, यू कैन पे फॉर दैट एंड यू कैन डू। ओके, लेकिन ये बात सद्दाम जो हैं, उन्होंने कोई 2 हफ्ते से वो रोजाना ट्राई कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अर्जेंट बेसिस पे, वो सबमिट करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था उनको। सर वो पाकिस्तान से कर रहे होंगे शायद। ठीक है, हाँ हाँ, पाकिस्तान से कर रहे थे। पाकिस्तान से नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की वो जो फीस आप पे करते हो ना, तब वहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। एप्लीकेशन आपकी तभी सबमिट होती है जब आप फीस पे करते हो। तो पाकिस्तान में एक लिमिटेड अमाउंट है, 2 लाख है शायद, 3 लाख है, उससे ज्यादा फीस आप कार्ड से एक ट्रांजेक्शन में पे नहीं कर सकते। $1600 अर्जेंट फीस लेते हैं ना वो लोग विटासिस वाले, तो वो दैट इज टू मच इन पाकिस्तान। नहीं पे हो पाया। तो आखिर में वो अब आज वेबिनार में आए थे, शुरू में सवाल कर रहे थे, सेकंड पर्सन थे, और उन्होंने शायद ये डिसाइड किया है कि क्योंकि उनको समझ आ गई थी मेरे साथ रहते हुए कि वहाँ पे जब आएंगे ना इंडस्ट्री वालों को जॉब मिलने में बहुत दिक्कत आती है, तो कैप्स ही करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट आई डू द कैप्स राइट नाउ एंड कम स्ट्रेट अवे। तो मैंने कहा दैट ठीक इज करेक्ट, है करेक्ट। एज वेल। सॉरी सितार, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? क्योंकि ये बात उन्होंने खुद से डिसाइड की, मैंने नहीं की, क्योंकि मैं तो अपनी बातें हर एक को बताता रहता हूँ, करंट सिनेरियो बता रहा होता हूँ, तो उन्होंने भी ये डिसाइड किया। तो आप दैट इज बेटर ऑप्शन। कोई कैप्स करना चाहे तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को आप इंडस्ट्रियल का असेसमेंट करके पैसे लगा के इधर आ जाएं, फिर आपको यहाँ पे दूसरी टेंशन होगी कि आप जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो यस सर, नौशीन आप मेरा जी सर, मेरा भी इंटरेस्ट जो है ना वो कैप्स में ही है। मैं इंडस्ट्री कैप्स को करो, कंटिन्यू नहीं करना आप चाहती। कैप्स करो विदाउट एक्सपीरियंस, 190 अप्लाई करो, इंग्लिश का टेस्ट पीटी अच्छे नंबर से करो, 80 नंबर लो उसमें, एंड अप्लाई फॉर दिस 190 वीजा। नो एक्सपीरियंस, डोंट शो एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग, जस्ट अप्लाई विद यू, विद योर फैमिली, विद योर किड्स, एनीवन कैन कम। बट सर अभी तो मेरा एमफिल चल रहा है ना, तो मेरा एमफिल ऑलमोस्ट जो है वो नवंबर दिसंबर 2023 में एंड होगा। तो आफ्टर दैट आई गेस 2024 में जो है वो मैं अप्लाई कर सकूंगी कैप्स के लिए। देखो, आपकी जगह मैं होता ना, आपको अगर एमफिल की फिक्र है तो एमफिल चलने दो, लेकिन साथ में इसको भी ऑन कर दो। और जी जी, अगर ये तो मैं स्टडी साथ साथ करूंगी ये भी, इसकी एग्जाम भी दे दो, आप एग्जाम भी दे दो, नवंबर में एग्जाम दे दो, या अगर जल्दी है तो जुलाई में एग्जाम दे दो, वीजा अप्लाई कर दो, वीजा आ जाए। वीजा आने के कोई 7-8 महीने, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने महीने तक आप आ सकते हो, शायद साल तक होता है या 6 महीने तक होता है। 1906 मंथ होता है और 491 के लिए 1 साल होता है।
फर्स्ट लैंडिंग के लिए। आपके पास सारे एडवाइजर बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि 12 महीने तक वीजा लगवा के घर पे बैठो आराम से, बोलो मेरा वीजा लगा हुआ है, मैं जाऊंगी जब मेरी डिग्री हाथ में आ जाएगी, आराम से जस्ट डू दैट, गेट दिस थिंग अंडर कंट्रोल। बस मुझे सर थोड़ा वही जो है ना कि एक थोड़ा डर है कि मतलब आप इन्वेस्ट भी करो तो क्लियर भी ना हो, तो उसके लिए थोड़ी क्लियर मैं हो जाएगा। चाहती हूँ थोड़ी देखिए स्ट्रगल कर लूँ, थोड़ी इतना पढ़ लूँ। आप सारे वो कहते हैं कि लिपन कोट से पढ़ो, और मैंने फार्मेसी में सारी जो है ना वो कैडजन पढ़ी है, तो मुझे मैं कहती हूँ मैं लिपन कोट दोबारा से स्टार्ट करूंगी, उसको पढ़ूंगी, तो वो शुरू से लेके एक होता है ना शुरू से अब पढ़ो, क्योंकि आपने जिस बुक से पढ़ा हो ना आप दोबारा उसे रिवाइज करो, वहां उससे दोबारा पढ़ना स्टार्ट करो, कैडजन तो से आई पढ़े, गेस आप वो कैडजन से पढ़े, आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी कैडजन से पढ़ा था, मैंने भी लिपिटॉर से पढ़ा था, लेकिन इम्तिहान पास होगा जब आप उन क्वेश्चंस को याद कर लेंगी जो बार बार रिपीट होते हैं, वो मेन टर्निंग पॉइंट होगा आपका एग्जाम पास करने का, खाली बुक से इम्तिहान पास नहीं होता है ये। जी सर, ये भी है, और दूसरा जो मैंने लास्ट वेबिनार लिए थे उसमें ये भी कह रहे थे कि अब रिकॉल्स, लेकिन रिकॉल्स की मेरे पास कोई ऐसी कोई बुक या कोई फाइल या कोई सब ऐसी मिल जाएगी आपको, PDF सब मिल जाएगी, भी मेरे नहीं ग्रुप में है, आप आ जाओ, तो असिस्टेंट करके आपको सब चीजें गिफ्ट के तौर पे उसमें मिल जाएंगी, एंड जस्ट एंजॉय द ग्रुप, एंजॉय द एलीट ग्रुप, और एक प्लेटिनम ग्रुप है जिसके अंदर सब वॉरियर की तरह तैयारियां कर रहे हैं, तो आप उस ग्रुप में भी आ जाना उनको कह के, तो आपको सिर्फ असेसमेंट ऑन करनी है एंड यू विल बी वेलकम इन द ग्रुप। आपको तो 1300 सर ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च करने, असेसमेंट डाल दो, दैट मीन दैट यू हैव बर्न द बोर्ड्स, यू आर जस्ट गोइंग अहेड। आप अपनी एमफिल जारी रखो, नवंबर में इम्तहान देना है 2, जुलाई में देना है 2, जो मर्जी करना करो, लेकिन जस्ट डू इट व्हाइल दिस फ्लो इज गोइंग, क्योंकि ये वाला वीजे वाला जो फ्लो था ना पिछले सालों में नहीं था, ठीक है ना, जो अभी चल रहा है जस्ट टेक इट, जो 2 लाख वीजे जो 12 महीने में जाने उसमें से एक आप अपना भी उठा लो। सर मुझे बस यही थोड़ी एक हो रहा है, क्योंकि जॉब भी है साथ में, एमफिल भी है साथ, फिर मैं स्टडी को कैसे टाइम, क्योंकि इसको स्टडी तो जाहिर सी बात है करनी ही करनी है, स्टडी के बगैर जॉब तो को क्लियर कॉम्प्रोमाइज हो कर सकती हो आप, जॉब को रिड्यूस कर सकती हो क्या आप, जॉब में थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके आवर्स कुछ कम कर लें, दिन कम कर लें? नहीं सर, इंडस्ट्री के आवर्स तो कम नहीं होते, वो 8 to 5:30 या 5 जो है वो जाना है कंपल्सरी है, और जॉब जिन्होंने के एग्जाम पास बगैर किया ना, जैसे अभी हमना ने इम्तिहान पास किया, उन्होंने 1 महीना छुट्टी ली थी, 2 महीने लग के जॉब भी की, 5 घंटे पढ़ाई भी की, लेकिन 3rd मंथ पे छुट्टी ले ली, पूरा ऑफ ले लिया, पढ़ाई की खाली, उनका इम्तिहान हो गया 3 महीने में। लेकिन सर मैं ये चाह रही थी कि मैं जैसे ही मेरा एमफिल कंप्लीट हो मैं जॉब बिल्कुल ही क्विट कर दूं, तो पूरे जो है ना वो 24/7 जो है वो टेस्ट की तैयारी के लिए जो ही आपका करूंगी। दिल करता है वो करो, जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है वो करो, क्योंकि आपको अपने हार्ट से मेंटली सेटिस्फाई जरूरी होना होता है पहले ना कुछ करने के लिए, लेकिन मेरा काम है सिर्फ बताना कि ये है ये है, ये कर लो जो आपको करना है, आपको सूटेबल लगता है कर लो, लेकिन नॉर्वे नहीं जाना, नॉर्वे नॉट रिकमेंडेड, नॉर्वे से नवंबर बंदे आ रहे हैं, कितने तक लोग थे मेरे ग्रुप में नॉर्वे। नवंबर तक टाइम बहुत है, अगर ये 1 घंटा भी डेली दे दें अभी से लेकर नवंबर क्या तक बात easily की सत्तार साहब ने कि 1 घंटा भी दे दें तो तब भी आपका नवंबर तक इम्तिहान तो हो ही जाएगा पास, आराम से हो जाएगा। मैं 1 घंटा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 2 घंटे पढ़ाई कर लो, आप आराम से नवंबर तक इजीली सेल करते हुए एग्जाम निकल जाएगा आपका, और आप थैंक यू बोलोगी हमको दिसंबर के अंदर जब रिजल्ट आएगा, अरे भाई आपने आज के दिन 7 तारीख को अप्रैल को ये बात की थी, आज इंशाल्लाह सर, रात इंशाल्लाह। के 9-10 बज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आपके पास मेरे ख्याल से 4 बज रहे होंगे रोजे के पहले, लेकिन जी सर। सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड यू नॉर्वे, बिकॉज नॉर्वे का मौसम भी ऐसा नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया का मौसम है, ठीक है। आई डोंट नो कि मल्टी कल्चरल कम्युनिटी है कि नहीं है वहाँ पे, लेकिन सतारा बता सकते हो कैसा मल्टी कल्चरल ऑस्ट्रेलिया है भाई, थोड़ा सा बता दो उनको। ऑस्ट्रेलिया तो सर बिल्कुल मल्टीकल्चरल है, आप जब ऑस्ट्रेलिया आते हो यू डोंट इवन फील के आप पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो, तो उसका तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। कल्चर लाइफ का तो आपको सारे पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे, इंडियंस भी मिल जाएंगे, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और नॉर्वे से तो ऑफ कोर्स बेटर है, नॉर्वे का से थोड़ा सा वो 6 महीने अपने कोर्स भी करना है, लैंग्वेज कोर्स भी करना है, वो बैरियर भी है, सो ऑस्ट्रेलिया सर इज वो ऑफ कोर्स 1 प्रेफर। ईयर का है, वो 6 मंथ का नहीं, 1 ईयर का है वो। तो 1 ईयर का तो उससे बेटर है आप 1 ईयर से पहले पहले आप एग्जाम भी क्लियर करें और कैप्स करके वीजा भी ले लें, यहाँ आ जाए, स्ट्रेट अवे जॉब शुरू करें, कोई लैंग्वेज की आपको एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज पीटी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आराम से स्कोर आ जाता है पीटी में। और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लोग बहुत वेलकमिंग है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो शायद अच्छी एक्सपीरियंस नहीं देते, लेकिन लोग अच्छे हैं यहाँ पे। और अभी
उसकी सबसे वाइडर एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अभी जो रमज़ान शुरू हुआ था यहाँ पे, तो उसमें हमने फार्मेसी गिल्ड के प्रेसिडेंट को याद दिलाया कि भाई 8 लाख के करीब मुस्लिम रहते हैं इस कंट्री में, ठीक है। तो आप क्यों ना एक ग्रीट करो अपने मीडिया से कि आप वेलकम करते हो रमज़ान को, और आपके पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है जो मुस्लिम है फार्मेसी के अंदर, उन सबको विश करो। और साथ में ये बताओ कि अगर किसी को रोज़ा रखते हुए कोई एडवाइस चाहिए एज ए फार्मासिस्ट, तो हमारे पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, फार्मेसी में आके बात करो। उसको वो आइडिया इतना प्यारा लगा मेरी तरफ से, उसने कहा अच्छा मैं भी करता हूँ। उसने इतनी ज़बरदस्त पोस्ट बनाई और टक उसने अपने सोशल मीडिया पे घुमा दी उसने वो पोस्ट ना पकड़ के, प्रेसिडेंट की ट्रेंड टोमी ने। तो जब वो पोस्ट लग गई तो मुझे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने कहा ये कहाँ करेगा ये, इसको इतना बिजी बंदा है, लेकिन उसने कर दी वो ना। तो फिर उसके बाद मैंने अपने ग्रुप्स में सबको बुलाया, मैंने कहा यार उसको थैंक यू बोलो। और उसका जो था फेसबुक पेज था वो फ्लडेड हो गया मैसेजेस से ना, कि इतने ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिली। और बाकी देखने वालों ने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ए मल्टी कल्चर कंट्री, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। और इनका प्राइम मिनिस्टर हो या इनका प्रीमियर हो, ज़रूर से कैमरे पे आके बात करते हैं कि भाई रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। ये मेरे ख्याल से होता होगा, शायद इंग्लैंड में होता होगा या कनाडा में होता होगा, आई डोंट थिंक कि हर जगह होता होगा ये। तो सर वो आप जो अभी ग्रुप्स का बता रहे थे, लाइक प्लेटिनम ग्रुप और वो प्रेपरेशन के ग्रुप में, उसको कैसे ज्वाइन कर सकती है? आपने असेसमेंट करनी है, असेसमेंट करके आपने मुझे रसीद भेजनी है। ये लो मैंने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं, $1300 जला दिए हैं मैंने, ये लो मैं आ गई हूँ तैयारी करने के लिए। तब मैं उनको आपको आने दूंगा, क्योंकि उसके अंदर सारे वो लोग हैं जो बिल्कुल सीरियस हैं, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नॉन सीरियस है। क्योंकि उसमें भी एक दो लोग थे जो फीस जमा करने के बाद भी इधर उधर देख रहे थे, यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं टेक्नीशियन पे आ जाता हूँ। मैंने कहा "ओ भाई तुमने $1300 दे दिए, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्यों मेरे साथ नहीं अपने साथ मजाक कर रहे हो तुम इस तरह की बातें करके? काइंडली या तो आप ग्रुप से चले जाओ या आगे चलो। तो उनको समझ में आ गई कि अब पीछे कोई रास्ता नहीं है, आपको सिर्फ आगे ही जाना है, इम्तिहान में बैठना है और इस एम के साथ बैठना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे और पास करेंगे, दैट्स इट। ये एक छोटा सा बात करने का तरीका है किसी को पुश करने का या मोटिवेट करने का बस। क्योंकि मैंने पहले ये ग्रुपिंग नहीं की हुई थी, मैंने ये पढ़ाने का तरीका ही नहीं किया हुआ था, लेकिन मैं पहले ये मैंने नोट किया कि मैं सबको चीज़ें बांट देता था पिछले सालों के अंदर। हाँ ये लो भाई ये लो पढ़ लो। तो लोग पढ़ते ही नहीं थे, बैठे रहते थे लेके, कुछ नहीं करते थे, कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो फिर मैंने कहा इसका फायदा क्या है, मैं किसी को बता भी रहा हूँ यार ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कुछ कर कोई उठता ही नहीं है करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं स्ट्रक्चर करता हूँ थोड़ा सा, लोगों को कल्चरल अवेयरनेस भी देता हूँ और फिर जॉब्स में हेल्प करता हूँ। जॉब नेटवर्क मेरा बहुत बड़ा है, जो लोगों से कनेक्शन है एम्प्लॉयर से। तो आज 2-3 लोगों की जिनकी जॉब है क्वींसलैंड में, एक अरेना हिल एक जगह है, एनजीओ की बात हो रही थी, उसने बात की है। अभी 5-6 इंटरव्यूज और हैं जो आज नहीं कर सके, हम कल भी करेंगे, कल भी छुट्टी है यहाँ पे। तो जस्ट फॉलो दोज। अगर आपके पास टाइम हो तो 10-15 मिनट लगा के ना उनकी बात सुनो जाके, हमना की बात सुनना जाके। उसने तो उर्दू में बात की है सारी, और उसने बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में बात की है, बिल्कुल खुल के, जैसे कोई पाकिस्तानी कोई लेडी जिसको जिसको मैंने उसका नंबर मुझे दिया था, उसके कज़न ने, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, ठीक है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा फैसल भाई ये आपने अपनी कज़न का नंबर दिया, बहुत बिजी लड़की है, कौन है, औरत है, कौन है, इसका नंबर मुझे दो, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया यहाँ से सऊदी अरब। और फिर मैंने कहा देखिए आपके कज़न है, उन्होंने मुझसे बात करने को बोली थी आपसे कि आपने एग्जाम करना है। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, नहीं सर मैं तो इफ्तारी नहीं कर सकती, मैं तो 12-15 साल या 2006 की ग्रेजुएट थी वो, ये नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। तो आधे घंटे तक वैसे 15 मिनट वो सिर्फ ये बोलती रही मुझे, मैं उनकी बातें सुनता रहा। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा आपने जब बी फार्मेसी की थी आपने नकल मारी थी? कहती क्या? मैंने कहा हाँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने चीटिंग की थी, आपकी जगह कोई और बैठा था इम्तहान में? कहती नहीं मैं ही बैठी थी। तो मैंने कहा अगर आप वहाँ बैठ के इम्तहान पास किया तो पढ़ के किया था ना, तो अभी पढ़ लोगी तो क्या हो जाएगा? तो उनको लगा कि दैट्स समथिंग लॉजिकल। तो उनको आज वो उसी फ़ोन कॉल को रिकॉल कर रही थी 5 मिनट। आप उनकी कन्वर्सेशन सुनिएगा कि वो फ़ोन कॉल जो थी ना 1 घंटे की, वो मेरी लाइफ चेंजिंग फ़ोन कॉल थी। आप गौर से सुनिएगा उनकी बातें आज जाके। तो मैं कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको मैंने कैमरे पे आने को क्यों बोला है? इसी वजह से बोला है कि आप मुझे आंखों में आंखें डाल के देख सके और मैं आपको आंखों में आंखें डाल के बता सकूं कि ये ऐसा होता है। एग्जाम आपने भी बोला कि एग्जाम पास होगा नहीं होगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये सब कहते हैं। आपको अपनी एबिलिटी पे बिलीव होना चाहिए, आपको अपनी एबिलिटी पे। आप एमफिल भी तो कर रहे हैं ना, जी सर। वहाँ भी तो आपको कुछ ना कुछ तैयारी करके जानी होती है, इम्प्रेस करना होता है कोर्स।
आउटलाइन होती है, आप एग्जाम पास करते हैं। तो ये भी कोर्स आउटलाइन है, इसका भी एक सेलेक्टेड टारगेटेड मटेरियल है, जो जिसको मिल गया उसके बारे में आ रहे हैं, जो नहीं कोई गाइड कर सका। यहाँ मैं जानता हूँ फार्मासिस्टों को जिन्होंने अपने लाइफ के 8-8 साल ज़ाया कर दिए, उनको कोई बंदा ही नहीं मिला गाइड करने का। वो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे इधर से उधर, कभी टैक्सी चलाते थे, कभी कोई स्टूडेंट वीज़ा कर लेते थे, फिर एक और स्टूडेंट वीज़ा कर लेते थे किसी तरीके से कि यार मुझे PR मिल जाएगी। 8-8 मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उन लोगों से, मैं मेरे ख्याल से मैं उनको भी ले आऊँगा एज ए रोल मॉडल ग्रुप के अंदर, बताने के लिए कि भाई 8 साल ज़ाया करके आज फार्मासिस्ट बने हो, क्या कदर है तुम्हारे सामने इस चीज़ की, क्या कहोगे दूसरे वाले को। या अगर कोई गाइड करने वाला मिल गया है तो जस्ट सुनो उसकी बात और जस्ट जंप इन रादर देन थिंकिंग के हम फेल हो जाएंगे। फेल होने का रिजल्ट जो है, रिजल्ट है ना, रिजल्ट में फेल होता है या पास होता है, तो आप फेल को तवज्जो दे रहे हैं। मेरे पास ज़्यादातर मेरे ग्रुप में एग्जांपल जो होती है ना स्पोर्ट्स पर्सन की होती है, तो मेरे पास एक वीडियो क्लिप है MS धोनी की, जो कि मैंने उस पर मिमिक की हुई थी। MS धोनी ये कह रहा है उसके अंदर, क्रिकेटर इंडियन कैप्टन जो है, वो कहता है कि डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट योर विनिंग और लूजिंग, जस्ट concentrate on your procedures, concentrate on your steps, concentrate on your hard work, concentrate on your strategies to achieve that desired result. Don't think about the result. If you do that 100% or 120%, you will achieve what you're targeting. ठीक है ना? जी श्योर सर, थैंक यू। सिंपल मैं नहीं कर सकता आई थिंक। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा गाइड किया और आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं अपनी एक कम्युनिटी के लिए, अपने फार्मासिस्ट के लिए, अपने कंट्री के लिए, वहां पे रहते हुए भी। आई रियली अप्रिशिएट यू सर। हमारे साथ शेख अब्बास बैठे हुए, पता है आपको, ये पाकिस्तान से नहीं है, ये इंडिया से हैं। ये जरूर से आते हैं मेरे वेबिनार के अंदर, ठीक है ना, और ये मेरे से 1 साल 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखें ये भी कुछ करने वाले हैं, अब इनको भी, लेकिन आई थिंक ही कांट अंडरस्टैंड Urdu, isn't it? You can't understand Hindi, right? So that's rubbish. We are talking in Urdu. So he's a Muslim person sitting in Chennai, but he speaks some different other regional language. But if I start talking in English, then he would understand what I'm saying. So I was just saying to Nosheen that don't worry about the results. What MS Dhoni say in his lectures to young cricketers, that don't think that you're going to win or lose. Just concentrate on your steps, your procedures, your hard work, and results will come. So this is what I was trying to explain about the KAPS. Thank you so much, sir. Thank you. Take care. Okay, Assalamu alaikum. How are you, Sheikh Abbas? Yes, sir. I'm fine, sir. How are you, sir? I'm very well. How's your work going? Are you vaccinating someone? Sir? Are you giving vaccination like Australian pharmacists giving vaccinations there? No, we don't do vaccination here. Okay. Just dispense medication. That's fine. I was just teasing you. I know that in other parts of the world, we don't do vaccination other than few countries. Yes. Thank you for joining. Muhammad Ilyas is asking, 47-year-old planning to write KAPS, already applied for assessment, lately come to know about the age limit, now very disappointed, please suggest. Okay, Muhammad Ilyas, the answer is for that fellow, your friend. Ask him to pass the exam, that's no problem, okay, and get an employer who can sponsor your friend to get here in regional Australia, then he can come. Okay, then he can come. He can work on temporary visa in Australia. Okay, if his wife is under 44 or 45 age, she may become a pharmacy technician by doing some courses and get a job, and then she can apply for PR. That's how that family can stay in Australia on permanent resident. So that's a quick answer, quick fix for this issue. Have you got the answer, Ilyas? Have you understand what I said? Ilyas, are you watching? Are you listening? Are you there? Or are you in work? Although this is recorded, if you have missed, you can watch it again. I have answered this question. The 47-year-old, pass the KAPS, get an employer to get a sponsor visa. In the sponsor visa, there's no age limit problem. They can come here and work with that company, 491 visa.
494 visa and 407 visa. Yes. Okay, on duty cannot use the voice. Sorry. Okay, that's fine. So you have listened. Thank you. Thank you. Any other questions that left over or not answered? So we can finish the meeting. Thank you everyone for coming. Thank you, Herbert, for again showing up. That's so nice of you. Thank you, Sheikh, for coming again. You always come to the webinar. So glad. Want to see you progress so very soon. Hopefully you will come to Australia soon. I know you have a huge desire. All right, so we close the session right now if no one has a question. All right, okay. Thank you very much for everyone to join and participate. Thank you, Satabaya. Thank you very much for coming from Bundaberg, Queensland. Bundaberg, I've never been to Bundaberg, but I've been to Queensland. You are most welcome, sir. You are most Gold welcome. Coast. Visit someday. Yes, why not? I know Bundaberg is not far from Queensland. Yeah. Oh, sorry, from Brisbane. Sorry. Brisbane. Yes. Yeah. Even Is if you it- come is to it- Brisbane, just let us know. We will catch up. Okay. Is it in North Queensland or is it not North Queensland? It is towards north, but it's very close, like 4 hours by driving from Brisbane to Bundaberg. Okay, so that means that North Queensland pharmacists can do the trial version of that program for prescribing medicine. So are you eligible for that program in your area or not? No, in Queensland, they did not yet started. I think it has just started somewhere in Northern Queensland, I know. Cairns, they started this in Cairns. Correct. So that pilot project is going on in Cairns. Once it is successful there, they're going to implement all over Queensland. So that is the first pilot stage, but they're running in Cairns for now. Yeah. Okay, that's nice to know. Thank you. Thank you for this update. All right, we'll close the session and recording will be there on live on our YouTube. If anyone has missed, please watch it again, make your notes. Most welcome. Come to Australia. A lot of jobs there for community pharmacists. All right, take care. Bye-bye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Wa alaikum salam.